दोस्तों स्वागत है आपका एमएमए हिंदी में। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं MFN 10 मैट्रिक्स फाइट नाइट 10 के बारे में। इस पूरे कार्ड का हम प्रीव्यू करने वाले हैं। इवेंट होने वाला है वर्साचे प्लाजो दुबई में। MFN गोज ग्लोबल जो कि टैगलाइन से आपको पता चल रहा है। मेरे साथ मेरे दो दोस्त हैं। लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस मिस्टर डॉनी बोन्स। डॉनी बोन्स, आपने इनको पहले भी देखा होगा हमारे साथ इंस्टा लाइव में। एंड Yep. is currently writing for One Dojo. One Dojo इंडिया का प्रीमियर MMA ऑर्गेनाइजेशन in terms of journalism है. Uh, you can follow both of them. Then we have Nikhil, that Geek Punk owner of and the host of that Geek Punk show. Everybody knows. इन्होंने MFN 9 में क्या कमाल किया था. He तभी has हमें built a अपेंडेंट very भी नहीं है इस बार। he इस has बार तभी हमें he has अपेंडेंट भी built a नहीं बुलाया। very very good reputation for himself in the Indian MMA scene. And currently he's working with one of the leading organizations, leading media organizations in the country. Welcome Nikhil, welcome Donny. How you doing, Thank guys? you so much, bro. And guys, this is Amit, the owner and host of MMA Hindi. Yeah. And I'm so One surprised of that our you still. leading, one of us guy who's leading the Indian MMA scene. Like a really knowledgeable guy. He knows a lot about Indian MMA and MMA across the world. सबसे पहले अगर मैं कुछ बोलना चाहूँ तो MFN मैट्रिक्स फाइट नाइट गोज ग्लोबल वर्साचे प्लाजो में इवेंट हो रहा है एंड डबल डिजिट इवेंट हो रहा है। MFN का ये 10वां इवेंट है एंड MFN का जो ये पिछले 3-4 सालों में जो ग्रोथ एंड जो इन्होंने एक इट्स अ रे ऑफ लाइट फॉर ऑल द इंडियन MMA फाइटर्स एंड इंडियन MMA कम्युनिटी एज अ होल। कोच एलन फर्नांडिस, सबसे पहले तो कुडोज टू यू। आपने इतना बढ़िया कार्ड रखा है। इट्स वन ऑफ अ बैंगर ऑफ अ कार्ड दैट यू हैव पुट ऑन। इसके बाद अगर हम बात करें MFN की, नो डाउट बिगेस्ट प्रमोशन करंटली अगर इंडिया में एक MMA सीन में कोई है तो इस कार्ड में हमें इंडियन और फॉरेन टैलेंट दोनों दिखने वाले हैं। ज्यादातर फाइट्स में इंडियन फाइटर्स और फॉरेन फाइटर्स की फाइट होने वाली है। बिगेस्ट थिंग, 4 बेल्ट इंट्रोड्यूस हो रही हैं इस पूरे इवेंट में। तो MFN के टाइटल इंट्रोड्यूस हो रहे हैं एंड वन बिगेस्ट थिंग ऑफ देम ऑल, हॉटस्टार पर ये इवेंट आपको देखने को मिला। नो मोर फेसबुक लाइव्स, नो मोर इंस्टाग्राम लाइव्स, नो Instagram मोर Live. यूट्यूब। वो YouTube हॉटस्टार पे आपको ये इवेंट देखने को मिलेगा एंड बेस्ट थिंग, हॉटस्टार पे आपको सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है ये देखने के लिए। Like उस दिन हमारे साथ लाइव Instagram लाइव पे राहुल भाई थे. The Rahul Chabra, one of the commentators, the guy who's behind One Dojo. Pioneer of Indian The MMA. pioneer of Indian MMA. Rahul bhai joined us in the Instagram live and told us कि आप हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लिए बिना भी MFN 10 का लुत्फ उठा सकते हैं। स्मार्टफोन सबके पास, so you can just tune in. Definitely. Donny, Yeah, I just want to say that even if you don't have sufficient internet pack, you can just recharge it plus rupees. No problem. So it's not just the 4 title fights that are going to be very, exciting for this particular card this weekend, but the other 8 fights that are there in the card as well. There are some few fights which, like, we will see some of the brightest, fighters from our country, so Yes. they will be fighting in this card. Like, it's most of these fights, I can tell you that they are very, very competitive matchups. So as much as we look forward to the 4 title fights, we should also watch out for these remaining 8 fights, because some of the, not only like the youngest guys, the brightest prospects, and you know they will be facing like competition not only from in the country, but some of them, they will be fighting guys like who are experienced in the international circuits as well. So personally, I'm very, very excited for this particular card. And I really want to say thank you to Mr. Alan Fernandez for making such a wonderful card. And that is all for now. Like, we met Alan sir like अभी MMA Nationals में मैं और अमित मिले थे. Like हम लोग साथ में मिले थे Alan sir से. So the thing about Alan sir is like he's a really humble guy. ठीक है? वो कितने बड़े वो हैं. Like he's such a big entity that we all know. But like उसके बावजूद the humbleness he carries with him is like
it is something to learn. It's something to inspire from. The way he treats you, like if you're Definitely, approaching him, definitely. if you're asking him something, if you're telling him something, the way he listens to you, it's not at all like that's a director. There's a guy who's running such a big, humongous entity like MFN. Yeah, So that's yeah. the beauty of Indian जरूर MMA. That's the जरूर beauty of Alan Fernandez, sir. जरूर मैं इसके बारे में क्या ही बोलूं, निखिल ने ऑलरेडी सब कुछ बोल दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पूरे रिव्यू शो की, और सबसे पहले हम बात करेंगे मेन इवेंट, संजीत बुधवार और अताबेक अब्दी मितालिपोव, Alpha. इनकी फाइट होने वाली है। एंड ये फेदरवेट टाइटल के लिए होने वाली है ये बाउट। तो फेदरवेट एक टाइटल बात फाइट और होगी है, जिसमें संजीत बुधवर और अताबेक की फाइट होने वाली है। अताबेक के बारे में अगर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर देना चाहूं, इज अ वेरी गुड रेसलर, 4-1 का इनका रिकॉर्ड है। एंड ग्रैपलिंग में इनके सबमिशंस विक्ट्रीज हैं पहले बहुत। ऑन ऑपोजिट संजीत बुधवार बहुत बढ़िया बॉक्सर हैं, बॉक्सिंग कॉम्बिनेशंस के लिए जाने जाते हैं, और जैसे कि बोलते हैं, ही इज ऑन अ टेयर इन द इंडियन एमएमए सीन राइट नाउ। डॉनी, Yeah. इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? Yeah, so I also want to say that Atabek has he's on a one loss I mean he just lost stint. his thing, his previous He's on a fight. stint of doing it. But the thing is that this guy, I mean, he looks like a well-rounded fighter because he has like submission wins as well as knockout wins. So I feel like for a guy coming from uh, I think Sanjeet might have his hands full with this particular fight because this guy, from what we've seen, he seems well. I mean, he seems a bit well-rounded. So I mean, I'm looking forward to Like this particular. So about Sanjeet भाई, mhm. like अमित नो MFN 9 से मेरा कितना कनेक्शन है संजीत भाई से। संजीत भाई के लिए एक प्रोमो कट किया था मैंने, I got banned after that. So one thing is, if you watch MFN 9, उनकी और जॉडी की फाइट, Yeah, so yeah, the thing is, he was not doing so well in the first round. Adversity yeah, में he gets better. yeah. Sanjeev bhai just gets better in the adversity. Like we Mm. saw that in the like last fight with Jordan. Yeah. So he won that fight from a losing position. He was losing that fight, then he won that fight. Yeah, he was in a position that लग रहा था कि भाई this is a turnaround. No one expected Jordy to do that. Kudos to Jordan. Like Jordy, he's a phenomenal guy. Jordy too. I love Jordy. So, but yeah, संजीत बुधवार like he put pressure on संजीत भाई, तो उससे उन्हें like you can see कि उसमें वो better perform करेंगे हैं. Yeah. He knows how to deal with it. He knows how to like अपने ऊपर उसे एक effect कैसे नहीं करना, affect कैसे करने देना हैं. They know how to affect on a good way. तो उसे लेके चलते हैं डेफिनेटली। हैं. He performs better in pressure, and this is a perfect thing. So like even if his opponent gets him down, ठीक है, वो एक राउंड नीचे भी रखता है, ठीक है. ही नोस क्योंकि 4 अलग राउंड्स हैं और ही कैन मेक अ कमबैक है. ही इज कूल, ही डजंट लूज हिज कूल. एंड सेकंड, उनका एग्रेसिव जो अप्रोच है, ठीक है, फर्स्ट राउंड हो, थर्ड राउंड हो या आगे कितने ही राउंड हो, वो अपनी एग्रेसिव अप्रोच मेंटेन रखेंगे, ठीक है, चाहे उनके ऊपर टेक डाउन. लेकिन आप देखेंगे फॉरवर्ड प्रेशर मेंटेन कर रखते हैं. ही इज ट्राइंग टू टेक द फाइट टू यू, नो मैटर इफ यू आर स्ट्राइकर, इफ यू आर रेसलर, ठीक है. ही इज ट्राइंग टू टेक द फाइट फॉर यू, एंड दैट इज व्हाट की उनका जो स्टाइलिस्टिक हेल्प टेस्ट करता है, क्योंकि बहुत पावर है उनके पास, ठीक है. एंड वी सॉ दैट ही कैन, अगर वो हिट करते हैं, यू डोंट नो, ही कैन नॉक हिम आउट कोल्ड, ठीक है. और अगर नॉकआउट भी तो ही इज डेफिनेटली रॉकिंग यू मैन, ठीक है. ही इज रॉकिंग ऑफ योर फीट, और 5 राउंड में से अगर यू टेक सच रिस्क, so you are losing the title. So I think, yeah, Sanjeev bhai knows how to deal with adversity. गुड, वेरी गुड पॉइंट। Another, एंड आई थिंक अगर मैं इसमें अगर कुछ बोलना चाहूँ तो बॉडी पंचेस बहुत तगड़े लगाते हैं, बिकॉज जॉर्जे की Exactly. जो हमने इनकी फाइट देखी थी MFN 9 में, इन्होंने पहले राउंड में जॉर्जे ने इन्हें माउंट किया था, फुल बॉडी, Exactly. सॉरी टॉप कंट्रोल लिया था इन्होंने। फर्स्ट राउंड डेफिनेटली हारे थे Exactly. वो किसी भी स्कोर कार्ड में, लेकिन सेकंड और थर्ड राउंड में So कम वो बैक करके उन्होंने विद दोस बॉडी पंचेस और अपना अग्रेशन, बिकॉज जैसा कि निखिल ने कहा, अग्रेसिव फाइटर हैं, वो आगे बढ़ते रहते हैं, तो उनके अग्रेशन की वजह से वो फाइट जीते थे। लेकिन अगर हम बात करें आताबैक की, आताबैक लाइट वेट डिवीजन से नीचे आ रहे हैं फेदरवेट में,
ही हैज उनके पास पहले बहुत सारी फाइट, उनकी जो फाइट्स हैं वो ज्यादातर लाइट वेट डिवीजन में हुई हैं, तो वो लाइट वेट से फेदरवेट में आ रहे हैं, तो आई थिंक he's a bigger guy. He's a bigger guy. He's a maybe a stronger guy because generally weight categories का यही जो होता है. And I believe एक रेसलर, अगर संजीत बुधवार का कोई क्रिप्टोनाइट है तो वो एक रेसलर है. एक परफेक्ट अगर रेसलिंग आपको मिल जाए तो संजीत बुधवार का एक क्रिप्टोनाइट है, एंड दिस माइट बी अ क्रिप्टोनाइट हियर. I won't क्योंकि say kryptonite, आप but अगर yeah, देखें तो if he, अंशुल जुबली के साथ ये फाइट हारे हैं संजीत बुधवार. बाकी Mhm. स्ट्रीम रोल करते गए हैं अपने सारे ओपोनेंट्स को अंशुल जुबली को छोड़कर, क्योंकि अंशुल जुबली ने इन्हें ऑन द फीट मैच किया, साथ ही साथ उन्हें टेक डाउन लेकर एक रेसलिंग ग्रैपलिंग गेम भी अपना इम्पोज किया उनके ऊपर. Anshul Jubli is a like one of a kind man, once in a lifetime fighter. Anshul Jubli is representing India, like he's once in a lifetime fighter. He's splendid. The way he performed in the semi-final bout of Road to UFC, splendid. And what I say is कि yeah, आपने जॉर्डी वाले फाइट में देखा कि टेक डाउन हो गए, तो प्रोबेबली अपनी टेक डाउन डिफेंस में अच्छा काम किया होगा. आई नो MFN 9 में काम था, and he was talking about it, like I'm working on टेक डाउन डिफेंस में. तो आई थिंक काम होगा, and he knows कि if a fighter on level of संजीत बुधवर, जिसे पता है कि मतलब वो किस लेवल का फाइटर है, he's aware of his skill, so he's well aware of his like a little drawback. So I won't say कि उनका kryptonite है. So yeah, उन्होंने I believe काम किया होगा, and he must be waiting for him कि कोई ना कोई एक काउंटर होगा कि if he tries to get me down, I'll do this, up kicks, anything. तो कुछ ना कुछ अपने आर्सेनल में ऐड करके आए हैं बैडमिंटन में. जरूर. डॉनी. Yeah, and let's not forget that Sanjeet has some serious like knockout power because almost all the fights that he's won, I think there was only one which he won by decision. Most of them they are knockouts. The Jordy So fight, as he yeah, won by decision, right? yeah, that was the Yeah. only one. Yes. So as much as like Atabek has that wrestling threat, Atabek will also be wary. Like he will not get too close to Sanjeet. Otherwise, if he gets too close and makes one small mistake, Sanjeet is not gonna knock And him the fuck up. see, That's it. and imagine like if you're trying to get Sanjeet Budhwar down, and in case you reach into the cage's wall, आप clinch moments में होते हैं, तो that's like a scary moment किसी भी फाइटर के लिए. अगर पावरफुल फाइटर है and you're in clinch with him, in clinch moments with him, तो आप उसे जैसे टेक डाउन लेने का ट्राई करेंगे, इतने में he can land a few hits, and a good hit, good plays, good timing, it's over. और like टाइटल फाइट का प्रेशर भी एक अलग चीज होती है. So like you're constantly thinking about कि मुझे अगर मैं यहाँ से जीतता हूँ टाइटल मिलेगा. Yeah. So I think Atabek का फर्स्ट फाइट है ये MFN, if I'm not wrong. Yeah, it's first fight. Yeah. MFN का डेब्यू है उनका. So like you know how big MFN is, तो उन्हें भी उनके माइंड में होगा कि यार कि अगर मैं यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करता हूँ तो I will do good. ठीक है, I'll do good, I'll perform better, मुझे और फाइट्स मिलेंगी, and I'll be a champion of a like such a big organization, such a big promotion, Matrix Fight Night. तो कुछ मेंटल प्रेशर भी हुआ है. संजीत भाई has performed like वो MFN में लड़ते आए हैं, तो he knows कि how to deal with pressure. तो I think एक ये एडवांटेज है संजीत भाई के ऊपर, उन्हें एडवर्सिटी से डील करना आता है. He doesn't get like crushed in pressure, and उन्हें एक्सपीरियंस है बड़ी फाइट्स. Yeah, the experience will also come to play for sure because Sanjeet has double the experience than Atabek has. So and he's fought under the bright lights more than he ever has. So yeah, that will prove a very, very important factor when this fight comes because I think this is the main event. I mean, this is the main event of the card, right? Yes. And this is the first ever like आज तक MFN में 5 राउंड की फाइट नहीं हुई है. It has always been 3 round fights. The belt fights would be the first ever 5 round fights in MFN history. And a guy who has been in through a lot, so he knows how to drag a fight. Yeah, exactly. आताबेक एक रेसलर है, तो ये भी सोच रहे होंगे कि लाइक मैं टेक डाउन्स लेके पॉइंट्स लेके फिनिश करूंगा. अगर मैं सबमिट नहीं भी कर पाता हूँ तो आई वुड हैव मोर पॉइंट्स टेक डाउन की वजह से. एंड लाइक यू हैव अ थिंग विद कि अगर अगर आपके पास आपको ओपोनेंट का आइडिया होता है, जैसे आताबेक नोज कि संजीत इसकी वीकनेस है रेसलिंग के अगर,
तो एक सिंगल डायरेक्शनल प्लान की तरह उस पे आएंगे कि I'll get him down, try to submit him. If I don't submit him, I keep him down. I'll keep the scorecard in my favor. And the same thing will be with Sanjeet भाई. उन्हें पता होगा कि ये करने आ रहा है ये try to like take me down. I need to defend it. और मेरे पास मेरा पावर है जो मेरा सबसे बड़ा वेपन है. And I would knock him out any moment. Yeah. Definitely. And Atabek, Definitely. जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं, Atabek एक फाइट हार के इस फाइट में आ रहे हैं. तो आप कहीं ना कहीं आपके माइंड में है कि आप एक फाइट आपके माइंड में फाइट है कि आप फाइट हार चुके हो, ठीक है, और आपको जो नेक्स्ट फाइट है इट्स अ टाइटल फाइट एंड दैट टू सच अ बिग प्लेस, तो यू आर अंडर मोर प्रेशर. आई विल से Atabek is under more pressure. I think one factor might work in Atabek's favor, because the guy has been. I mean, the fight is going on in Dubai, right? The card is going to be is going to be in Dubai, and Atabek at the moment he's training there and he's fighting there, so he is used to that climate over there, and I'm sure very like good observation. in his favor, that one. Good one, Donny. Nice one, bro. So like आप आपको आदत है उस क्लाइमेट की, उस एरिया की आपको आदत है, तो यू कैन लाइक आपकी बॉडी ज्यादा बेटर प्रिपेयर करेगी. एंड आई थिंक आज ही फाइटर्स ने ट्रैवल करना स्टार्ट किया है. इट्स टुडे, और आज से और कल से द फाइटर्स स्टार्टेड रीचिंग दुबई, और शायद सब पहुंच चुके होंगे इस टाइम तक. तो सारे फाइटर्स पहुंच चुके हैं ऑलरेडी. दे आर इन दुबई राइट नाउ. दे आर इन दुबई. I was watching stories सुबह जैसे क्रेमेले and all, so they were traveling आज. And so नहीं, एक्चुअली व्हाट हैपेंड, जो क्रेमेले हैं उनकी कल फ्लाइट थी फ्रॉम दीमापुर टू दिल्ली. कल रात को उनका स्टे था दिल्ली में. तो आफ्टर दीस ऑल गाइज रीग्रुप्ड, आज सुबह वो लोग निकले हैं दिन में. सॉरी. या So let's move on to another big fight of the card, which is Pooja Tomar versus चौधरी, और उनके सामने है उलूमी करीम. एंड फन फैक्ट, दोनों अलग-अलग फाइट के नाम ले दिए भाई. फन फैक्ट, ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइट होने वाली है. नॉट ओनली क्रिकेट के अलावा भी हम राइवलरी रीइग्नाइट कर रहे हैं अपने स्पोर्ट में, एमएमए में. एंड दिस गाय उलूमी करीम के बारे में अगर मैं बोलूं तो इंडिया पाकिस्तान फाइट्स का इनका बहुत एक्सपीरियंस है. ऑलरेडी 2 फाइट इंडियन से लड़ चुके हैं ये. एक जीते हैं, एक में हारे हैं. रिसेंटली मोहम्मद फरहाद ने इनको हराया था इन ब्रेव. उसके बाद ये हालांकि फाइट जीते हैं. बात करें ध्रुव चौधरी भाई की, तो ध्रुव चौधरी हाउ टू से इट, 2012-13 से इंडियन एमएमए सीन में आप इनको देख रहे हैं. 2012-13 में स्टार किड तो नहीं बोलूंगा, बट फेसेस ऑफ इंडियन एमएमए अगर मैं बोलूंगा तो नहीं, किड गलती से आया. किड गलती से, ही इज अ स्टार. किड वो लाइक इट वाज जस्ट अ अगर इंडियन एमएमए के कुछ माउंट रशमोर अगर आज आप खड़ा करेंगे तो ये चार में से एक इनका नाम जरूर होगा, बिकॉज़ ही इज सो पॉपुलर थ्रू आउट द कंट्री. He is so popular throughout the country. Like, Donny, he's one of the most popular superstar, one of the most popular MMA superstar of India. Yes, definitely. Donny, आप कुछ बोलना चाहेंगे? Let's start with you. Yeah. This is another of those fights which I'm very much looking forward to, because yeah, you're right. Dhruv is one of the biggest. He's one of the biggest MMA fighters and superstars in India, as well as Ulumi. I mean, okay, he might be coming from a loss against few Indian fighters which he's fought, but the thing is that he'll be representing his country. So just a point of correction, वो हार के नहीं आ रहे हैं. उनकी जो फरहाद के साथ फाइट हुई थी इंडिया पाकिस्तान, उसमें हार के आ रहे हैं, बट राइट नाउ एक 1 फाइट विन स्ट्रीक पर हैं वो उलूमी करीम. I was about to get to that, bro, and just hold on, don't wait. Okay, just let me just reply to this one particular message. Yeah. Meanwhile, Anil, आप कुछ बोलना चाहेंगे? What I will say is कि I don't want to disrespect a fighter. ठीक है. I don't want to say anything controversial, but if it's India versus Pakistan, you know where I'm rooting for, you know who I'm rooting for, and you know who will win this fight. I don't have to say it.
and we know it. If it's India versus Pakistan, you know who's gonna win it. Yeah, So we know exactly. Dhruv Chaudhary got the belt in the bag, baby. He's bringing the belt home. Yeah, but Be it, man. He's bringing the belt home, man. Like I said, I don't want to like I'm not disrespecting Ulumi or anything, but history speaks. Whenever it is India versus Pakistan, be it any stage, India comes on top. भाई India हॉटस्टार so पे इंडिया has their number. पाकिस्तान हॉटस्टार पे हॉटस्टार पे इंडिया पाकिस्तान सबने देख लिया, अब उलूमी करीम और ध्रुव चौधरी भी देख लो. डॉनी गो exactly. अहेड. Yeah. Exactly right. And one more thing I want to add is that, like, yeah, of course, I'll be hoping for Dhruv to win, but let let me just add one more thing, okay? Even Ulumi is also coming for the win. He's going to be very, very highly motivated to come and win this fight. By hook or by crook, he will fight. He will put up a fight. But and on top of one more thing is that the guy like Ulumi, he has experience in the डेफिनेटली. international circuit, so his experience might come into play in this Come in particular handy. fight. So yeah, it's gonna be very interesting, and I mean obviously it's an India versus Pakistan matchup, so the stakes are gonna be high, and on top of that, the title is on the line. And on top of that, the India Pakistan rivalry. So this fight is gonna be This fireworks. I this believe is some. this is this is as big as the main event, man. This is as big as the main event. Like we don't have any super Exactly. fight this time. Like we don't have any super fight like MFN 9, but this is the Yeah, super fight. India versus yeah, Pakistan. Dhruv Chaudhary versus Lumi. Yeah, this is the super fight of MFN 10. The stakes are as high as it can be. They're probably the highest. This fight is as big as the main event. You got a title on the line. You got India versus Pakistan. You got the Indian star. You got versus the Pakistani star. Like, what more you want in a fight? It's a story without a story. Like, they don't have any rivalry. They like yeah. still, it is as big as any rivalry out there. Like, you don't The need a right story to make the story big. the rivalry is already there without being there. So Yes. that's it. जैसा कि जैसा कि डॉनी ने बोला एक्सपीरियंस फाइटर हैं, लेट मी जस्ट चाइम इन. यू नो, वर्ल्ड सीरीज ऑफ फाइटिंग, उसमें ये फाइट कर रहे हैं, ब्रेव में फाइट कर चुके हैं, तो Yes. एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होने वाला है. प्लस फेयरटेक्स में एक स्कॉलरशिप फाइटर है, ही इज अ स्पॉन्सर्ड फाइटर फेयरटेक्स प्रमोशंस के साथ. फेयरटेक्स Wow. जिम अगर आप लोग नहीं जानते हो भाई, कहाँ थे अब तक? फेयरटेक्स, यू नो, स्टैम्प फेयरटेक्स, रॉड टैंग, मुई थाई का बेस्ट अगर कोई जिम है थाईलैंड में, दैट इज फेयरटेक्स. तो फेयरटेक्स में ये और ये ट्रेन कर रहे हैं. बहुत बढ़िया कॉम्पिटिशन, सॉरी, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग पार्टनर्स के साथ ये ट्रेन कर रहे हैं. आपने अगर इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते तो आप इन्हें देख रहे होंगे. और साथ ही में पाकिस्तान से निकले हुए सबसे बढ़िया फाइटर हैं, बेस्ट फाइटर्स फ्रॉम पाकिस्तान जो निकले हैं, वो उलूमी भाई हैं. एंड जब मेरी इनसे बात हुई तो यू नो, ही इज अ वेरी स्पिरिचुअल गाय ऑल्सो. अगर इनका, एंड स्पिरिचुअल गाय प्लस अ गेमर, तो इनका अगर दोज इन द गेमिंग the कम्युनिटी spiritual gamer. क्राटोस, नहीं, एक्चुअली इनका जो निकनेम है क्राटोस, वो एक गेम से निकल के आ रहा है. तो आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट दैट आल्सो. या, एनीवन That must have अगर, excited you a lot, right? हाँ, Guys, what happened? I was saying spiritual gamer. All right एंड then. आई थिंक इस So बार वो what's अपना नाम शायद चेंज करके आने वाले हैं, दैट एलियस वो शायद चेंज करके आने वाले हैं, इफ आई रिमेम्बर करेक्ट. नॉट श्योर व्हाट द नेम माइट बी, बट क्राटोस में चेंज. या, तो इसके अगर एक इसके चीज और आगे बस मैं बढ़े ऐड हम, करना इसके चाहूंगा. आगे. नहीं, बस आगे बढ़ने से एक चीज करूंगा. जैसे आज हमें एक बहुत फेमस डायलॉग मिल चुका है अमित का एमएमए हिंदी की तरफ से. लाइक ये अपनी हर वीडियो में यूज कर लेते हैं, जैसे आज इन्होंने यूज किया. आपको फेटेक्स का नाम नहीं पता था तो अब तक कहाँ थे आप? लास्ट टाइम ने बोला कहाँ आप थे? माइकल चैंडलर को नहीं जानते थे तो अब तक कहाँ थे आप? तो इसकी आदत हो गई है हमें. अब तक कहाँ थे आप? और अगर आपने अब तक ये आपने एमएमए की हिंदी के मुंह से नहीं सुना है तो अब तक कहाँ थे आप? हमने बात सुन लिया है.
बिल्कुल, बिल्कुल। ब्रो एक्चुअली ये तकिया कलाम है भाई का। दिस कम्स फ्रॉम अ मीम। अगर आपने कोई नहीं, नहीं, दिस इज़ नॉट अ तकिया कलाम। अगर आप मीम देखते होंगे तो अगर आप मीम देखते हैं तो इफ यू नो, यू नो। अगर ये मीम रेफरेंस आपको समझ में आ रहा है तो यू नो। सो ये चलिए वाला भाई मीम आगे रेफरेंस समझ बढ़ते नहीं आया, हैं एंड लेकिन मेरे लिए ये आगे डायलॉग है, ट्रेडमार्क डायलॉग है एमएमए हिंदी। Exactly. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। This is like आगे that Dina. This बढ़ते is हैं इस like फाइट कार्ड Dina's में dialogue. एंड If you don't know now, you know. वो मैक्स हॉलोवे का डॉनी वी डायलॉग है नीड टू बाय द कैच वे। अप भाई। Ah, chill, bro. डॉनी वी नीड टू गेट आउट ऑफ आगे डायलॉग्स भाई। अगर हम I'll catch up. I'll catch up, Leap. I'll catch up eventually. Don't you worry about that. All इस right, फाइट bro. कार्ड Let's में move on. आगे अगर हम बढ़ें तो हमारे पास फ्लाईवेट टाइटल के लिए फाइट है अंगद बिष्ट और मोहम्मद गमाल के बीच में। मोहम्मद गमाल कम्स फ्रॉम इजिप्ट। फन इनका नाम है, द एक्सिक्यूशनर इनका एलियस है। बात करें अंगद बिष्ट की, देहरादून जोन अंगद बिष्ट सब जानते हैं, वन ऑफ द फेसेस ऑफ इंडियन एमएमए। देवभूमि भाई, आई थिंक अगर मैं देवभूमि। बोलूं तो इंडिया के टॉप फाइटर अगर कोई इंडिया में है अंशु जुबली के बाद, दैट इज अंगद बिष्ट। दैट इज अंगद बिष्ट एंड डेफिनेटली। देहरादून जोन अंगद बिष्ट म्यूटेंट एमएमए एकेडमी में ये ट्रेन करते हैं एंड आप इनकी पिछली फाइट्स देखें तो आपको लगेगा कि ये एक ग्रैपलर हैं, बट नहीं, ही इज अ वेरी गुड बॉक्सर नाउ। ही इज अ वेरी गुड ऑल राउंड फाइटर। निखिल, गुड। भाई अंगद बिष्ट इज नॉट अ नेम लाइक, अगर आप अंगद बिष्ट को नहीं जानते तब तक कहाँ थे आप? Like he has been a face of Indian MMA. Like Indian MMA चेहरा है you है. If you don't know Angad Bish, I don't know like where have you been, bro? Like Angad Bish is like the bad boy of Indian MMA. He is the savage guy. ठीक है? Not bad boy like he's a bad guy or something. But the attitude he carries with him, the way he carries himself, he, you know, like you're not scaring that guy off, man. अगर तुम face off में हो तो expect him to stay there. ठीक है? The way he looks, the style he carries with him, bro. Like अगर तुम आमने सामने हो तो you gonna fall back. Like the vibes you get from that guy is like scary. The aroma he carries, the charisma he carries, like Angad Bisht is a beast. Angad Bisht is a beast. He is phenomenal. Like style ने बोला, जैसे मैं एमएमए हिंदी बता रहा है कि अमित बताया आपको कि he is a really good striker, and he has been working on his wrestling. So like skills ऑपोजिट में तो कुछ है ही, ऑपोजिट like skills में आपने ऑपोजिट बोल दिया है, सॉरी। He's a like very he good was a wrestler. striker, He bro. started as a wrestler. Now he's a Okay, yeah. transitioning to boxing. Well, like वही he मैं has, बोल रहा था। like at the end of the day, he has both skills in his bag. So like he is an all-round fighter. And what gives him a bonus is कि उसका attitude, the way he carries himself. Yeah. Like fighters are there, they are very great fighters, good fighters, skilled fighters. लेकिन the way you carry yourself, the way you show yourself to the public, to your opponent, do a lot to you. वो आपको मैच में आपके बारे में बहुत बताएगा। हैं? Definitely. आप यानी फाइट से पहले उससे बहुत कुछ ले जाओगे तू। sorry. आप फाइटर्स को डरा दोगे, हैं? नॉट डरा दोगे तो मतलब लाइक ही नोज कि आप में वो पोटेंशियल है, हैं? यू कैन हार्म हिम इन द गिवन फाइट। और 5 राउंड विद अंगद बिष्ट, like that is scary for any fighter in this world. 5 rounds with Angad Bish. Donny, See, and I feel like, I mean, I've seen quite a few fights of Angad Bish, okay, and with each and every fight that he's fought, he seems to increase like to another level. The last fight that he fought with Himanshu Kaushik, he wiped the floor, man. He wiped the He floor wiped the in floor that with fight. him. So like, and the thing is that now that I feel, and I think he said last time in the fight, somebody must have said it. It was not him, that somebody must have said it, that he's gonna be fighting in the flyweight division for now. So like whoever is gonna fight in the flyweight division, if this guy wins the title, it's gonna be very very hard to take the title off his hands. I swear to God, because this guy, with each and every fight, with each and every particular fight, he keeps on growing and growing and growing. And on top of that,
he has not just power, but he has skills on the ground as well. So, and if a guy just keeps on adding more and adding more, like, and on top of that, he's not even that old also. I think, how old is he? Not even 30 He's also. I around. think maybe No, no, 27, he's 28. around That. 27 if I'm not wrong. So he's in the, like, at that peak age where fighters peak, right? So, and it's gonna be, if Angad wins this title, that's it. But another thing I'm gonna add is that he's fighting a former champion. This Muhammad Gamal, I did some small amount of research on him. I think he was flyweight champion of his own, like, in an in an Egyptian Promotion promotion. So this guy knows what it's like to be a champion. to be in a title Knows fight. what, To be in a title yeah. fight. Yeah. So yeah, And it's gonna I be. think I'll Sorry, add sorry. this to Donny Wale point me. He, like he said, he knows the experience, and Yeah. I think like Donny did his research, Angad must have did his हिस्से की research भी. So I think ये belt जो होगी दोनों ही fighters को motivate करेगी. Like titles on the line means motivation. ठीक Yeah. है. आप एक लेवल पे मोटिवेटेड हो कि मुझे बस ये वाला फाइट जीतना है. आई एम अ चैंपियन, आई एम अ वर्ल्ड चैंपियन, and a world champion at MFN means a lot. You're representing the whole country, to be honest. Yeah. अगर आप MFN की belt holder हो, Yeah. तो Angad is motivated, so is his opponent. But the only difference, opponent को experience है title fights का, and Yeah. this might be the first one for Angad. Yeah. So Angad has a lot. Like, to be honest, Angad prove करते आ रहे हैं, and still, like, if he beats this guy opponent, like if he beats this, he gets the belt. Yes, like he would prove it to everybody. He is the guy. Like like if there's a Mount Rushmore, eventually you will put my name in there. Yeah. You have to put my name in there eventually. Zarur. Okay? And the thing is, Angad Bisht motivates himself. Like you guys talk, he gets better after every fight. Yeah. So what thing, he doesn't need anything else to motivate him. He is self-sufficient to motivate himself. He motivates like, I have to do better. The only guy that I need to be better is from me, the one me from yesterday. Okay, that's the like mindset he has. So, and that's what separates him from like the rest of fighters, I believe. So another thing I would like Right. to add about this Mohammed, you, Go ahead. you Go want ahead. to say something? Okay. नहीं So नहीं, go another ahead. thing that I would like, yeah, yeah, okay. So another thing that I would like to add about this Muhammad Gamal is that, since he lost his title, he has suffered a few losses. But from if you look at his win record, he seems to be, like, very very skilled in the ground, because most of his wins have come, like, through submissions, and most of his wins, they, like, he got them, like, from his ground game. So Angad has to be very very careful about him. But I believe, like, even Angad being a wrestler, as he used to be, like, yeah, I mean, sorry, he has a wrestling background, so I'm sure he will be able to defend, like, whatever tricks whatever tricks Gamal has, like, in the दोनों Like ground. predominantly one more thing, wrestling है. one more Sorry. thing I will add this man. I'll add ki what Tony said. He has experience. So Yeah. with experience come ki, like we all think ki title jeetna hai. Finishes, we talk about finishes. Yeah. An experienced fighter knows ki points में भी कैसे fight को लेके जाना है. How you need to divide the points into 5 rounds. How you need to secure yourself. कि अगर fight doesn't get to a finish, it's your hand that is getting raised at the end. And that stuff comes from experience, the fight IQ, the experience. That and that's where like he might get an upper hand. Okay, he has been in title fights. He has lost a title fight. He has won a title fight. So he has experience. No, He no. knows Actually, कि मुझे उन्होंने he has not lost any title fight. Uh, what happened was it was AUFC, if I some okay, local promotion. वहां पे flyweight title जीते. उसके बाद 2 साल के लिए okay, इन्होंने fight नहीं किया. And Oh. okay. he was a The title was flyweight stripped. champ. He was a champ who They never stripped of the he title. was the Conor McGregor basically. He won Right. the Okay, championship, never defended, and then string of okay. losses piled up.
और अब ये फाइट कर रहे हैं अंगद बिष्ट से। दोनों प्रिडोमिनेंटली रेसलर्स हैं, सो देखना बहुत ही रेसलर अगेंस्ट रेसलर इज क्वाइट अ कैसे बोले, इट माइट बी अ स्नूज फेस्ट, लेकिन अंगद बिष्ट No, I won't अगर call it a आपने snooze fest. Even Wrestler, how like, can it be a fast, bro? नो नो yeah, how can it be a snooze व्हाट fest? आई एम सेइंग, अगर एक रेसलिंग गेम में जाता है, जैसा कि हम कोल्बी कविंगटन और कमारू उस्मान के लिए बोल रहे थे कि एक स्नूज फेस्ट होगा, लेकिन वो हुआ नहीं। तो मेरा व्हाट द That पॉइंट आई it एम is one of ट्राइंग the टू most मेक इज, entertaining fight in the UFC history. Both of them, by even the match and the rematch, they are the most entertaining fights in the history of UFC. Exactly. या तो आई वाज अबाउट टू Same. से द सेम कि एक एवरीवन प्रेडिक्टेड ए स्नूज फेस्ट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे दोनों रेसलर हैं, माइट बी अ स्नूज फेस्ट, लेकिन अगर हम अंगद की बात करें तो अंगद हैज वेरी गुड बीजेजे स्किल्स ऑन टॉप ऑफ रेसलिंग, वेरी गुड बीजे। ही इज देयर आर ओनली टू गाइज पूरे इंडियन एमएमए सीन में, सिर्फ दो बंदे हैं जिन्होंने ट्विस्टर पुल किया है। ट्विस्टर सबमिशन करने वाले इंडिया में सिर्फ दो ही बंदे हैं, दोनों म्यूटेंट एमएमए एकेडमी से हैं, देहरादून जोन म्यूटेंट एमएमए एकेडमी। First one, Coach Angad Bisht. The second one is Sagar Thapa. So Look at this guy. that's the He's fact here. like that. He's happy, man. He's happy. No. Dehradun UK07. Yeah, another fact. Karma का MFN dialogue है. promotion. There's a rapper Karma. If you guys know about Karma the rapper. So dialogue देहरादून का मेरा खून. नहीं एक्चुअली Like his famous dialogue. बहुत सारे रैपर हैं देहरादून से, बट विषयांतर हो गया Karma थोड़ा। is a Karma is like a I know, really I know, famous one, by Kalamkar का rapper. Like Karma is really famous I too. He's know, like he's lyrically good too. I know bro। And कार्मा like कार्मा है, बहुत they सारे हैं, कलमकार में ही 3-4 हैं। और बोल, लेट्स विषयांतर हो गया, बट व्हाट आई वाज सेइंग, अंगद बिष्ट, another fact, light division, featherweight division, bantamweight division, now flyweight division, 4 डिवीजन में फाइट कर चुके हैं एमएफएन में, सब में जीत के सब में उनके पास एक विक्ट्री है। तो अनदर कॉनर he's मैग्रेगर competing. वाला फैक्ट है यहाँ पे। हाँ, यस, मैं कॉनर मैग्रेगर वाला पॉइंट मारने वाला था. बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑलरेडी एक बहुत ही इलस्ट्रियस करियर है अंगद बिष्ट का इस पूरे इंडियन एमएमए सीन में। I'm a fan, by Angad Best. I'm a fan. Like you gotta talk about him. He's a kind of fighter who will make you talk about him. Like you can't keep him out of the conversation any time. जरूर। He knows how to like. He's great, by like you can't argue. He is good, and like without the title fight experience, he is motivated. Yeah, and he would be there to wipe the floor, like Donny said, to wipe the floor with his opponent. He would be there. Yeah, I'm coming here to win, and I'm coming here to thrash my opponent. Okay, my opponent can be good, but I'll be the better guy on that given day, and that's the kind of motivation you need in a title fight. Closing comment on this? Yeah, I don't really have any closing comment on this, so why don't you make the closing comment since he's your hometown boy, right? It's only fitting, na, that you should do it. Yeah. You should have seen him by जैसे कि IMA Nationals में. भाई का सपोर्ट बढ़ जाता है म्यूटेंट एमएमए के टाइम पे. He gets like भाई really देखो, good. ऑब्वियसली अगर देहरादून से कोई निकल के आगे जा रहा है, आई एम फ्रॉम देहरादून, द फर्स्ट सपोर्ट विल गो टू द देहरादून गाय ओनली। दैट्स That is why बेसिक फैक्ट। it's लेकिन only fitting that you do it. You give the closing statements. डेफिनेटली, एंड आई थिंक अगर अंगद का जैसे प्रोग्रेशन की हम बात कर रहे थे, तो प्रोग्रेशन आप अंगद का देखो, स्टार्टेड एज अ रेसलर, देन उसके बाद आप ही एमएफएन 8 में चुंगरेन कोरेन हु इज अ वेरी गुड रेसलर, उनके साथ फाइट किया। एमएफएन 8 में इन्होंने चैतन्य गावली के साथ फाइट किया। चैतन्य गावली इज अ पर्पल बेल्ट इन बीजेजे। Yeah. उनके साथ ऑन द ग्राउंड स्ट्राइक करके उन्हें नॉकडाउन किया, और फिर रियर नेकेड चोक से सबमिट किया। सेम थिंग ही रिपीटेड विद हिमांशु कौशिक। हिमांशु कौशिक, आई वाज वेरी अफ्रेड हिमांशु कौशिक के साथ इनकी फाइट हो रही है। व्हाई? बिकॉज हिमांशु कौशिक वुशु बहुत तगड़ा है, उनका वुशु चैंपियन रहे इंडिया में। देन वन चैंपियनशिप में जाके ये मल्टीपल फाइट्स जीते हैं, वहां मल्टीपल फाइट्स खेली हैं और जीती हैं इन्होंने वन चैंपियनशिप में। वेरी हाई कैलिबर ऑफ फाइटर, एंड उनको जाके स्टीम रोल करना जिस तरह से उन्होंने किया, नॉकडाउन लिया, रियर नेकेड चोक से सबमिट किया, आई वाज सुपर हैप्पी दैट डे। एंड आई थिंक अगर एमएफएन Himanshu 9 Kaushik is में a big name. इज अ Like बिग Himanshu नेम, Kaushik is a big name. एमएफएन 9 में अगर आप थे तो द बिगेस्ट
cheer an Indian fighter got was Angad Best. Biggest cheer. और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि म्यूटेंट वाले लड़के वहां पे थे 6-7 तो वो कर रहे थे. The whole public joined in No, with I wasn't Angad. there, bro. I wasn't there, bro. I was banned. I wasn't there. I was banned. Ah. I'll tell you I one thing, wasn't okay? there, bro. I'll tell you one thing, okay? I mean, I don't mean to be disrespectful towards Himanshu, but the thing was that I can't sugarcoat what I saw, right? Angad Bisht wiped the floor, man. Wiped the floor with his He that Definitely, actually match. did, definitely he man. did. Nobody's lying here. Like he did, and the slow wiping was bigger because it was against Himanshu Kaushik. Exactly. I बिल्कुल. mean, to put चलिए out अब It put makes out a guy like that in that kind of fashion, it was like, wow, man, this guy, it's like he reached another level. What can I mean? It's crazy, right? But it was fun. I loved it. I loved each and every bit of it. Because you see, like sometimes, like we think that fighters who have fought in the international level, they might have much more experience or much more better skills compared to guys who fought only the Indian. Okay, Angad has not only fought in the Indian circuit; he's fought in Brave as well. But the thing नहीं is नहीं that, वो like, ब्रेव वाला कार्ड it happened in hold on, man, देहरादून, it hold on, happened in hold Hyderabad on. only, I and he know, fought just hold against on. Kushal Vyas. Okay, I saw that fight, by the way. yes, let me finish, right? Sorry, sorry. Let me finish. Too quick But to it jump. shows, Sorry. right? Okay, bro. It shows that fighters who are born and bred inside the country as well, like even they can do so much better. Even they have the talent, and with the right kind of guidance and the right kind of coaching, they can. I mean, they can perform, and on top. And another thing is that we are known for our wrestlers. You know, India is known for its wrestling. We've won so many medals in the international level and all, and you know, our wrestlers are no joke. So, and when you got a guy who has a very very sound wrestling base like Angad, like for a casual fan, he might be surprised. I was a bit surprised, but then I remembered, oh my god, this guy is a wrestler. Obviously, he has the power and he has the capability to do this. Yeah, that's all. Please, I'm sorry for. like I'm sorry. I like to Yeah, add something into this. Okay, like you said, the experienced fighters, like Indian-based fighter doing good against experienced fighters. Yeah. This not only shows caliber, and it's more about sending a message. कि our homegrown fighters, like हमारे खुद के fighters, they are good, doing so much great. Yeah. They have the skill set to impress people, and MFN is the biggest stage to do that. And if you're doing that in MFN, like you're representing your country, and you're getting a stage that is big enough to do. MFN 10 में हमारे पास एक जो लास्ट टाइटल बाउट है वो है इनॉग्रल स्ट्रॉवेट टाइटल, दैट इज द 115 पाउंड चैंपियनशिप जो MFN की होगी. फीमेल Between टाइटल जो women, पहला women title. MFN में इंट्रोड्यूस होगा, दैट इज स्ट्रॉवेट, एंड इसमें फाइट कर रही हैं किलर बी. व्हाट अ गुड नेम, किलर बी, बी एनगायन, और उनके सामने है द हरिकेन, द साइक्लोन पूजा तोमर. डॉनी, योर ओपनिंग कमेंट. yes. This is the fight that I wanted to speak about. I mean, I actually wanted to start off with this particular fight because I'm very I'm excited about this fight too, bro. I'm the most you excited know about this fight. these girls, they fought each other once, and that was action packed, man. It was crazy, like, hands and elbows and knees flying all over the place. And yeah, B might have got that win through, it was a unanimous decision or split decision, I forgot. यूनानिमस. I wrote I even wrote an article on it and I forgot. Sorry. But yeah, I'm really looking forward to this fight because these girls, every time they step inside the cage, they step in to put on a show. I mean, when you look at B's record, she has never lost via knockout or any submission or anything like that, if I'm not mistaken. Right? And she comes to fight, so does Pooja. I get it, like B is on, I think she may be on, let me just check the thing. So B is on a two fight uh losing skid, but Losing both streak. of her fights were this
decisions. So I mean, we know, yeah, whether this fight stays on the feet or on the ground, this guy is this fight is gonna be like pure action. And Ritu, Uh, yeah, Pooja, sorry, damn, Pooja. What can I say about Pooja, man? Both her fights, the fight that she had with with Jojo. Did you guys watch that? It was crazy, right? Yes. And then the one which she won, the last one against Tenzin. That girl looked like she was not even supposed to be there. Like, in how many seconds was that? 30, 20 seconds? She just 37. knocked out. It was like, wow. So I spoke I so like to add fast. something. I like to add something. जरूर And it's like a question. ये फाइट और ये राइवलरी कुछ याद नहीं दिला रही तुम लोगों को? हल्का हल्का अभी रिसेंट में कुछ हुआ है. दो फाइटर्स राइवलरी, Mania ये versus बड़ी राइवलरी थी. No, I'm telling you, like दो फाइटर्स इनकी राइवलरी एक अलग स्पोर्ट में थी, अलग एलेक्स पहेरा प्रमोशन में थी. आडेसानिया हाँ. एलेक्स पहेरा Then they changed it for a title fight एक अलग प्रमोशन में. जहाँ पे पहले से ही जो हारा हुआ अपोनेंट एक स्टार है. इसी की तरह पूजा इज स्टार MFN में. And B comes in here for a title fight. वहाँ पे Alex Pereira comes in for a title fight. So it is like a same story, but I hope कि result इस बार थोड़ा सा story का different है. I out of intrigue, I'm gonna ask you both a question. Okay, how do you think you would feel if B wins the title? Bro, to be honest, I would be like a little bit disappointed. I would like to see Pooja win, man. Like I would like to see Pooja win. Yeah, I would be disappointed, but then like it won't be like such a, you say, wipe the floor kind of thing. It would be a close fight, Yeah, and B is a good opponent. So I think there will be probably a rematch down the line. So I know a good, like, no matter who loses or no matter who wins this fight, we are here to witness one of the best women fight. Like it will be one of the best women fight ever. What about you, डेफिनेटली Amit? How would एंड आई थिंक अगर फाइटर्स के बारे में बात करें तो दोनों फाइटर्स का जो रिकॉर्ड है उसमें जो भी इनके मैचेस रहे हैं बहुत ही बढ़िया ओपोनेंट के साथ हुए हैं. बी एंगाइन की बात करें तो रितु फोगाट को हरा चुकी हैं ऑलरेडी. रितु फोगाट को हरा चुकी हैं. उसके अलावा स्टैम्प फेयरटेक से हार चुकी हैं. तो द क्रीम ऑफ द क्रॉप जो है वन चैंपियनशिप Yeah. की स्ट्रॉवेट डिवीजन की उसमें ये फाइट कर चुकी हैं. और अगर पूजा तोमर की बात करें तो पूजा तोमर इनसे मुay थाई फाइट में हारी जरूर थी लेकिन इसके बाद वन चैंपियनशिप में मैच जीते हैं इन्होंने. साथ ही में स्टैम्प फेयरटेक्स जैसे ओपोनेंट के साथ फाइट कर चुके हैं. दोनों फाइटर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं आई थिंक. और पूजा And B के Yes. corner में is a UFC fighter. There'll be a UFC fighter in B's corner. बिल्कुल एक यूएफसी फाइटर इनके कॉर्नर में होने वाला है बी एंगाइन के कॉर्नर में. एंड अगर हम साइक्लोन पूजा तोमर की बात करें तो बाली एमएमए में इन्होंने पूरा अपना ट्रेनिंग किया है इस बार. तो इन बढ़िया ट्रेनर्स के साथ फाइट किया है. तो आई एम श्योर कुछ अपने जो इनका मुay थाई जो इनका स्ट्राइकिंग जो इनका बेस्ट है उसमें कुछ ना कुछ आर्सेनल में ऐड किया होगा इन्होंने. लेकिन अगर बी एंगाइन टेक डाउन करती हैं तो दैट माइट बी एक प्रॉब्लम हो सकती है पूजा के लिए इसमें. क्योंकि बी एंगाइन ने इवन रितु फोगाट को टेक डाउन किया था. स्टैम्प फेयरटेक्स को इन्होंने टेक डाउन किया था जो इनकी पुरानी फाइट्स मैंने देखी हैं. तो यही है कि फाइटर बहुत क्लोज फाइट होने वाली है. स्ट्राइकिंग अगर बैटल होता है तो हम देख चुके हैं एंड आई थिंक माय फ्रेंड डॉनी ऑलरेडी बोल चुके हैं कि क्या बढ़िया इनकी फाइट थी. नेक टू नेक फाइट एकदम इनकी थी. वो एक यूनानिमस डिसीजन विक्ट्री मिली थी लेकिन नेक टू नेक फाइट थी वो. निखिल Like you said, भाई. और यार हम ही बोलते रहे, this will be barn burner, like they say. ठीक है? The money fight, the people fight. Like this will be the fight that can steal the show. Bigger than the India versus Pakistan fight. Bigger than the main event. Like they have the rivalry behind it. Yeah, they have a story behind it. Nothing's better than a story to a story, like to a fight. And it is like another chapter. I won't say कि conclusion होगा. No matter who wins it, ठीक है? This is just another chapter to their story.
they would collide again, probably on the same platform or some other platform. Eh, probably in the same combat sport or in some other combat sport. But these women, by like, are coming for a war. They're not coming for just for the title. They're coming for a war, and like you guys will witness a barn burner fight, man. And like as much as I know that this fight will open the fight card. Yeah. So it may like it, that this may like after this fight, the other fight may look like underwhelming. Okay. And like इस fight के शायद तो बाकी fight underwhelming लगने लगे कि पहली fight में तो सारा action देख लिया कि तो you don't know कि क्या क्या हो जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल. Yeah, Donny, it's it's fitting to open a type. I mean, you know, to to open the all the title fights with this particular fight because when as soon as people watch this fight, they know. I mean, whoever follows MMA, they will know what kind of fight this is gonna be. So there are gonna be a lot more eyes and and I will say one more. Yeah, this fight, Pooja Thomas Killer B will put MFN on global notice. Like we have good men fight coming up, but it will be this fight that will put MFN on global notice, man. Like the amount of caliber this fight has, it is yeah. like both of them have tons of potential, both of them have tons of skills, and like they can do phenomenal, and they're just rocking it. It's definitely. the best of India versus one of the best atomweight fighters from all over the world. I mean, okay, fine. Beam may have been Strawweight. on a losing. No, no, atom weight. This why it's gonna be strawweight. Sorry. Okay, never mind. Let's move on. या What I was saying. इसके अलावा हमारे पास एक मेन कार्ड में आफ्टर दिस 4 टाइटल फाइट्स हमारे पास फाइट में है. जो पहली फाइट है वो है जोजो राजकुमारी और प्रिया शर्मा के बीच में. प्रिया शर्मा फेयरटेक्स, लेट मी ऐड दैट. प्रिया शर्मा फेयरटेक ट्रेन करती हैं. ही इज अ स्कॉलरशिप ओन्ड फाइटर, स्पॉन्सर्ड फाइटर फेयरटेक्स जिम के साथ. बहुत बढ़िया, एंड आई थिंक अगर मैं बोलूं कि शी हैज बीन इन द गेम फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. 2012-13 से ये आप आपकी टाइटल सॉरी या फिर टाइटल कंटेंडर फाइट है. जो भी ये फाइट जीतेगा विल फाइट द विनर ऑफ बी और पूजा. Like I think so, bhai. Definitely. The winner of this fight is fighting B and Pooja. The winner of that fight. And that's why like this fight gets bigger. Each and every fight that is not a title fight on this card is still a big fight. Because that fight will give you a future title shot. But is this fight going to be in atomweight or is it going to be in strawweight? Oh, it's going to be in strawweight. I think it's in a straw. स्ट्रॉवेट डिवीजन में ये फाइट होने वाली है 115 पाउंड की जो चैंपियनशिप बेल्ट है उसके लिए. एंड जैसा कि मैं बता रहा था प्रिया शर्मा के बारे में, फीमेल फाइटर्स सुपर फाइट लीग के जमाने से हम देखते आ रहे हैं प्रिया शर्मा को. प्रिया शर्मा एंड फेयरटेक्स में ट्रेन करती हैं. स्टैम्प फेयरटेक्स, करीम उलूमी करीम, अनीता करीम, इन सब के साथ रॉड टैंक के साथ ट्रेन करती हैं. तो स्टैंड अप में इन्होंने बहुत सारी चीजें ऐड की होंगी अपने गेम में. साथ ही में रिसेंटली आई थिंक 2-3 महीने पहले इन्होंने सियाम कप में बीजेजे में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है और अभी एक मुay थाई फाइट्स जीत के आ रही हैं ये. तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है प्रिया शर्मा का. बात करें अगर जोजो की, तो जोजो शी इज राइट नाउ द फीमेल स्टार सुपरस्टार ऑफ इंडिया. इनका जो नॉकआउट था MFN 9 में, दैट वेंट वायरल नॉट ओनली इन इंडिया, ग्लोबल में ये वायरल हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड. मीशा जैसे लोग ESPN में इनको फीचर किया गया है टॉप 10 नॉकआउट्स ऑफ द मंथ में. तो आप देखेंगे एक जहां से ये निकल के आ रही हैं मणिपुर से, बहुत ही इफ आई में से गुर्बत से निकल के एकदम यहाँ टॉप तक पहुंच रही हैं. एंड इसके पीछे इनके कोचेस का बहुत बड़ा हाथ है. एंड शाउट आउट टू रुपेंद्र भाई. रुपेंद्र इनके मैनेजर हैं एंड ही हैज बीन वर्किंग टायरलेसली विद जोजो इनके पूरे कैंप में. एंड रिसेंटली इन्होंने वॉरियर्स कोव में जाकर ट्रेनिंग करी थी फॉर अबाउट अ मंथ.
तो एक I would say एक experienced fighter against a young hungry fighter. ऐसा ये fight that's the fight word that I can say for this fight. Donny. Yeah, Jojo is one of the biggest upcoming female fighters coming out of the Northeast. It makes me so proud, you know. It makes me so proud of her. And on top of that, the only loss that she suffered in her professional career was to Pooja Tomar, and that too, like, she dragged the fight for the whole 3 rounds, and it was full of action. But unfortunately, she lost. But I know that this fight is gonna be like, it's gonna be a clash of, I mean, the thing is that, yeah, like what you said, experience versus new, like, you know, a prospect. So okay, like maybe for Priya Sharma, like her record is in MMA is not that many, but I believe he has I mean, he has a fair amount of experience in Muay Thai, right? So, and I believe Yes. that both these girls they're gonna they're gonna fight standing up, man. I mean, maybe Priya might try to take this particular fight to the ground, but if Jojo has to say something about it, then I think she will try to keep the fight standing. What do you think? वन फाइनल कमेंट ऑन जोजो जो मैं बोलना चाहूंगा वो ये है कि इनकी पहली फाइट जो पूजा तोमर के अगेंस्ट हुई थी दैट वाज यू नो हाउ कैसे बताऊं कि एक मछली अगर पानी से बाहर आ जाती है तो वो शी इज अ वेरी गुड स्ट्राइकर बट शी इज नॉट अ ग्रैपलर पूजा तोमर ने उन्हें एमएमए में एंट्री किया जब उनकी हुई तो शी शोड हर दैट एमएमए इज नॉट अबाउट ओनली अबाउट स्ट्राइकिंग तो उसके बाद से इन्होंने इशिका थीटे को सबमिशन किया ज्यादा ग्रैपलिंग अगेन हमें दिखी नहीं क्योंकि नॉकआउट करते हुए आ रही हैं अपने पिछले फाइट में तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये फाइट देखना एंड और क्विक नॉकआउट था बोल दो स्केरी नॉकआउट डॉनी एनी फाइनल थॉट्स निखिल No final And I'll thoughts. just agree. I've said, like, like this fight is the title contender fight. The winner of this fight is getting a title shot. Yeah. So there's a lot at stake, and both these women are hungry, man. They're hungry. They know that they have the potential, they have the caliber, they have to get that title shot. And they know this fight is the one that will get them the title shot. This fight will put them in the title picture. So you know it. Like the stakes are high, like as heck as it can be. MFN 10 is clearing the rooftop. Like the fights are big, the stakes are big, the rewards are as much as big. Exactly. And Priya, I think she'll be looking to make a point in this particular fight. Because Jojo, Yeah. I mean, as far as I understand, Jojo is much more established in MFN. Not a more established fighter, but in the promotion, Jojo is much more like established. So yeah, like, and you're right with what you said, Nikhil. So this, I mean, if she wins this fight, she will be like, you know, in the title conversation for sure. And same goes with Jojo as well. If she wins this fight, she gets in the conversation. Like they have a lot to prove. Like they have, despite of proving themselves, they have a lot of proof. Like we are not just like your side boys. Like we're not there to like we are not the journey guys. We are here to be champion. Yeah. We have but get to be a champion and we will be champion. So yeah, like this will be huge. Mm. So what do we move on to now? Can't hear, bro. Amriti can't hear you, bro. आई एम सॉरी आई वाज ऑन म्यूट आई एम सॉरी फाइट कार्ड में अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास एक फेदरवेट डिवीजन में फाइट है अगेंस्ट ब्राजील के फब्रिसियो ओलिवेरा जो पहले भी एमएफएन में फाइट कर चुके हैं एंड मेन इवेंट कर चुके हैं एमएफएन के 8 के कार्ड को और उनके सामने है अजीज Yes. बेक अजीज लेट्स कीप इट अजीज बेक ओनली लेट्स कीप इट ओनली या तो अगर इनकी हम बात करें तो फब्रिसियो ओलिवेरा बहुत ही बढ़िया इनका आई वुड से ग्राउंड गेम इनका बढ़िया क्योंकि इन्होंने ग्राउंड में कुछ समय डोमिनेट किया था अब्दुल अजीम बदाख्शी को एंड अब्दुल अजीम बदाख्शी बहुत ही बढ़िया फाइटर हैं इंडियन एमएमए में ज्यादातर लोग इन्हें जानते होंगे मोस्ट प्रोबेबली अगर नहीं जानते हैं तो एमएफएन 9 में जो हुआ उसके बाद तो सभी जानते हैं एंड
ग्राउंड गेम बहुत बढ़िया है, स्ट्राइकिंग ठीक-ठाक है। इसके बारे में अगर कुछ आप बोलना चाहें डॉनी? I don't. I mean, honestly speaking, I haven't seen much of him except for the fact that he's fought in MFN and he put up a spirited. It's gonna be. I don't know what are the consequences of this particular fight. So let's see. I Exact. mean, Satibaldiev is making his debut in the promotion, and he's coming fresh off a win recently. I think last year. That is what I know. And in his last five fights, he has suffered only one loss. And the guy looks like Satibaldiev. In all honesty speaking, like he looks like a well-rounded fighter. So I think this is gonna be a very very tough test for Fabrizio. And like I'm talking about, like I'll agree with Donny on this. He, the fight can be good. It's a different thing. But I don't know उसका future direction क्या रहेगा. Like आपके पास दो तीन और फाइट्स हैं यहाँ फेदरवेट डिवीजन में, तो इवेंचुअली आप सोचेंगे कि एक फेदरवेट की फाइट जो इस कार्ड पे करा रहे हैं आप, उसको आप फ्यूचर में संजीत बुधवर वाली फाइट और आपकी जो संजीत बुधवर वाला मेन इवेंट है उसके विनर से फाइट कराएंगे उसकी है. बट इवेंचुअली आपके पास दुष्यंत सिंह और अविजो भी फाइट कर रहे हैं. देन यू आल्सो हैव श्याम आनंद फाइटिंग द फेदरवेट डिवीजन. लाइक तो इस पर्टिकुलर फाइट का, क्योंकि फैब्रिशियो इज रिटर्निंग आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो आई डोंट नो कि आप इसे कहाँ डायरेक्ट करना चाहते हैं. पर्टिकुलर या तो इसे है, या तो इट इज जस्ट अ मिड कार्ड फाइट कि आपने मिड कार्ड यू हैव टू कीप अ फाइट दैट कुड टर्न आउट एंटरटेनिंग. तो इट डेफिनेटली कैन बी एंटरटेनिंग. बट अगर आई डोंट थिंक आपका कोई डायरेक्शन अभी शायद से है कि आप इसे टाइटल फाइट छोड़िए, इंटरिम टाइटल फाइट में भी जैसे नहीं डालेंगे, बिकॉज यू हैव फेदरवेट डिवीजन इज क्वाइट स्टैक्ड. यू हैव गुड फाइटर्स इन दिस. ठीक है, you have fighters that can represent the game, and I don't think no like I don't have any like something bad to say about Fabricio or the other guy, but yeah, they have been like, they have not doesn't have that much depth to get a title shot at MFN featherweight title. They like they will have to fight once or twice more to get to that title shot. Like you got a guy like Shaman, you also have like star like Dushyant Singh coming in, who took the fight on short notice. You have Avizo. Yeah. You guys you are pretty much stacked top to bottom. So in the featherweight division, so I don't think this fight has any direction. That's a correct word you say, direction. It doesn't have any direction, future direction. कोई नहीं, लेट्स मूव ऑन. द ओनली थिंग जो मैं अजीज बेक के बारे में बोलना चाहूंगा, ही हैज फॉट इन सम गुड प्रमोशंस. आंख मात के में ये फाइट कर चुके हैं. ही हैज फॉट इन यूएई वॉरियर्स आल्सो. तो एक एक्सपीरियंस है. 17 और 8 का इनका रिकॉर्ड है. तो दोनों फाइटर्स बड़े एक्सपीरियंस फाइटर हैं, एंड होपफुली एक अच्छी फाइट हमें देखने को मिलेगी. डॉनी, अगर आपका कुछ क्लोजिंग कमेंट है तो. No, yeah, you're right. He's very very experienced, and I think this is gonna be a tough one, man, for Fabrizio. Very very tough fight. चलिए चलिए इस फाइट कार्ड में आगे बढ़ते हैं. एंड अनदर फेदरवेट फाइटर जो हमारे पास है, फाइट जो हमारे पास है वो है श्याम आनंद और रिचर्ड मर्न्स के बीच में. एंड आई थिंक हम तीनों एक्साइटेड हैं इस फाइट के लिए. Sham Anand is my guy. Not only like he is my guy. Not only me, he is my I love Donny. Not only me, हम तीनों इस फाइट के बारे में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं. श्यामानंद के लिए पर्टिकुलरली हम एक्साइटेड हैं इस फाइट में. श्यामानंद एक बहुत like बढ़िया, he is a protagonist, bro. I'm not sorry for cutting you, sorry for that, but yeah, Sham Anand is like a protagonist. नहीं He is like a hero down there. He's not like a movie star. So he's like and probably like, and we talked about Sham Anand might get the future title shot after this fight. So he might be in the line for a title shot after this. Like, he's a star, dude. You might get a title shot. And like I was talking to Sham Bhai for a few days back. So we talked about Kera, yeah, bhai, I have won the titles. Kera, I'm not in a title fight like right now. But yeah, the future is there. I'm in for the title fight. I'm winning this fight. Like if MFN gives me a title fight, I'm all for it. So like he is excited for it.
Yeah, and Shamanan has like he has said he spoke he told me like he would like to call out Sanjeet Budhwar after this particular fight. And yeah, that makes a good matchup because his first pro fight in MMA, he lost to Sanjeet Budhwar, and I feel like um, you know he says that he's a brawler. You know, he has said it again and again. But the thing is that when I watch all his fights, every shot that he takes now he picks all his shots and he times each and everything really well. So he has improved a lot from his first fight, and he wiped the floor with I mean all of his opponents, man, in his last two. It was crazy. It was like he just manhandled them, man. So wow, it was sad to see guys going through stuff like that. You know, he just swarmed and ran all over them. But at the same time, it shows, na, like you know, he has risen a level above so many of these guys in the featherweight division. That that is my honest opinion about him. I'm telling you, well, बिल्कुल एंड he अगर is. या गो Yeah, go ahead. on, Amit, go on. Like I was just saying, नहीं नहीं बोलो बोलो like I was agreeing with Donny. Like skill wise, like he's improving with each fight. Like all of these guys are improving with each fight, and and like now they have the prize in front of them, the MFN belts. So the motivation has just gone to the next level. Like now you have the belts. Now you want, like now you know what your target is. Now you know where do you have to target your rage, where you have to target your like training. You have a goal in your mind. Get that belt and defend it. Get that belt and defend it. Like that's the thing. And like with belts coming in the scene, like with MFN introducing the belts, the stakes are like we're talking like since the start. Stakes are high, and they will only go higher because fighters will only get motivated here. Okay, they have a goal. They want that reward. They have been training so hard. They have been performing so well, and now they want the reward. बिल्कुल एंड अगर हम शामानंद को देखें तो शामानंद लुक्स वेरी अपने फेदरवेट डिवीजन के लिए बहुत बड़े दिखते हैं उनकी ही हैज अ वेरी गुड हाइट इन हिम इफ आई एम Exactly. नॉट रॉन्ग 6'2 उनकी 6'2 उनकी हाइट है एंड 6'2 हाइट होने के बाद मस्कुलर मस्कुलर ही लुक्स लाइक योएल रोमेरो थोड़े से और अगर हैवी होते तो ही All लुक्स लाइक योएल muscles. रोमेरो प्रोबेबली All muscles. या All muscles. बिल्कुल, बिल्कुल एंड अगर की बात करें संजीत बुधवर के साथ का डेब्यू था। डेब्यू फाइट में ये हारे हैं। डेब्यू फाइट हारने के बाद हाउएवर बाउंस बैक किया अभिषेक नेगी के साथ। एमएफएन 8 में सॉरी एमएफएन 7 में जो इनकी अभिषेक नेगी के साथ फाइट हुई, आई थिंक ब्लडीएस्ट फाइट ऑफ इंडियन एमएमए आज तक की। इससे ज़्यादा ब्लड मैंने कभी नहीं देखा होगा दिगंबर की फाइट छोड़ के। दीज़ 2 फाइट्स एंड अनफॉर्चुनेटली And एक that was फाइट from Sir में Prakram. दिगंबर वाली फाइट में जो ब्लड आया सिर्फ पराक्रम से आया. आई Like नो। those नहीं तो elbows, those elbows ऑन में. दी हाँ वही मैं बोल रहा हूँ कि संजीत सॉरी श्याम आनंद की फाइट में जो ब्लड बैथ था वो ऑन दी ऑपोजिट साइड ही हुआ लेकिन इतना ब्लड बैथ मैंने पहले कभी नहीं देखा था इंडियन एमएमए सीन में दिगंबर वाली फाइट को छोड़ के दैट वाज और उसके बाद इनकी जब फाइट कृष्णा हीर के साथ हुई दैट वाज अगेन बहुत बढ़िया स्लिक ग्राउंड एंड पाउंड है आईसीएसए में ट्रेन करते हैं संजीत सॉरी नॉट संजीत जितेश भंजन के Shaman. जितेश भंजन के अंडर ट्रेन करते हैं जितेश भंजन के अंदर कंथराज अगासा जैसे बढ़िया किलर्स इनके साथ ट्रेन कर रहे हैं ऑन द ऑपोजिट साइड रिचर्ड बर्न्स इंडिया में पिछले इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पिछले 1.5 साल से हैं राइट नाउ जिमखाना मुई थाई नेपाल में ट्रेनिंग कर रहे हैं एंड नॉट ओनली ट्रेनिंग ही इज द हेड कोच एट जिमखाना मुई थाई तो अपना खुद का सब देखना कोचिंग करना देन अगेन अपनी फाइट के लिए भी स्ट्रेटेजाइज करना दैट माइट बी टू मच फॉर हिम लेकिन ही इज अ ब्राउन बेल्ट इन बीजेजे इंडिया के जो पहले लास्ट ईयर जो बीजेजे कॉम्पिटिशन होते उनमें ये पार्ट ले चुके हैं एंड ही हैज बीटन सम गुड क्वालिटी कॉम्पिटिशंस इन बीजेजे तो बीजेजे गेम इनका बहुत बढ़िया है ही इज अ रियली गुड ग्रैपलर स्लिक सबमिशंस इनके पास हैं वेरी टेक्निकल तो आई थिंक मेरे हिसाब से जैसा कि डॉनी बोल रहे थे ब्रॉलर अगेंस्ट अ टेक्निकल गाय हो सकती है फाइट
because Shamanand goes for the kill. Shamanand goes for the kill. Yeah, Technical Donny, please. brawler. Technical brawler. Good wordplay. Good wordplay. Yeah. And any comment, Nikhil or Donny? No, bro, we're done. They're gonna fight better. कूल। तो इसके बाद हमारे पास जो अगली फाइट है वो है मूसा और राइश मूसा और क्लिंटन डी क्रूज की। क्लिंटन डी क्रूज अगेन ही ट्रेन्स एट आईसीएसए अंडर जितेश भंजन। तो और इससे पहले एमएफएन 7 में इनकी फाइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभिषेक नेगी के साथ ही हुई थी। आई अपोलोजाइज, नॉट अभिषेक नेगी, साहिल राणा के साथ हुई थी। साहिल राणा इज अनदर गाय फ्रॉम म्यूटेंट एमएमए एकेडमी, अनदर गाय फ्रॉम म्यूटेंट एमएमए एकेडमी। उनको हराया था इन्होंने। एंड उसके बाद ये इस फाइट में आ रहे हैं। राइश मूसा दो लगातार फाइट बॉन्जोवी के साथ जीतकर इस फाइट में आ रहे हैं। एमएफएन 9 में इन्होंने बॉन्जोवी को हराया था, इससे पहले भी दो फाइट लगातार जीत के आ रहे हैं उनके साथ। एंड both of these guys are undefeated. Both of these guys are undefeated as of the moment, if I am not wrong. नहीं, no, राइश मूसा हैज लॉस्ट। सो एक बढ़िया फाइट देखने को मिल सकती है हमें फ्लाईवेट डिवीजन में। डॉनी? Yes, you said it, bro. Like both of these fighters, they are undefeated in MFN. And Clinton, I think he's fighting again after how long? Let me just check. Yeah, he's gonna be fighting again after almost 1 year. So when Musa, he has been active for quite some. He has been active this year. He fought. He beat. Like the first time when he fought Bon Jovi, it was a bit competitive. But the third fight when the second fight when he beat Bon Jovi, that one, like, he showed that he is much more better. But he's coming up against a guy who's undefeated in Clinton Cannon. So, and Clinton, he's got a slick ground game, and even his stand-up is also quite good. I mean, both of these guys, I think they are on the same levels. They are up and coming, and they are both young. This is like, I don't want to say much about both of them, because both of them, they are exciting fighters. I mean, it'll be an entertaining fight. More or no, it'll be an entertaining fight, and like a good mid card fight. So like it gets you going. yeah, Like yeah. three rounds of like like good fight. You're there to witness some entertainment. Like you won't be bored according in the mid card. Like these are some like good entertaining fights. The fighters will go at each other, and they'll try to finish each other eventually. अगली फाइट जो हमारे पास है वो है अवीजो लानामाई और उनके अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं दुष्यंत सिंह। इट्स अ लेट नोटिस फाइट दुष्यंत सिंह के लिए। राहुल थापा ओरिजिनली फाइट करने वाले थे अवीजो लानामाई को। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम इश्यूज, बट फर्स्ट ऑफ ऑल कुडोज टू दुष्यंत। 1 हफ्ते के नोटिस में फाइट लेना, दैट इज रियली अमेजिंग। दैट रियली स्पीक्स वॉल्यूम्स उनका, उनके गट्स के बारे में, उनके, बिकॉज 1 हफ्ते में फाइट लेना अगेंस्ट अ गाय हु कम्स फ्रॉम टीसीए। अविजो लानामाई टीसीए में ट्रेन कर रहे हैं अंडर क्रेमेली। बहुत ही बढ़िया कैंप उनका है। एंड इट टेक्स लॉट ऑफ करेज टू एक्सेप्ट द फाइट। एंड अगर दुष्यंत की अगर हम बात करें तो दुष्यंत, इनकी जो पुरानी फाइट्स मैंने देखी हैं उसमें ही इज अ वेरी गुड रेसलर, वेरी गुड ग्रैपलर। स्ट्राइकिंग इतनी ज्यादा मैंने इनकी नहीं देखी है, बट grappling, he's a very grappling heavy guy. Very good. I like to change it a little more. He is more than just good. He's like very good will be understatement for him. He has trained with Indian Olympic medalist Ravi Dhaiya. Like इसका जो core है, he's like, and Dushyant is the fighter I'm most excited to see. Like he has a story. He's here to prove things. Like has talked about, like everyone has talked, or like he has a lot to prove. Like not to like to the people, he wants to prove it to himself that he wants. Like so, he has a story, and the guy is phenomenal.
Yeah, he has skills plus the desi guys we all are like we are super strong with एक natural power रहता है. ठीक है, स्किल्स तो सबके पास होती है लाइक गाइस लाइक संजीत भाई एंड गाइस लाइक दुष्यंत भाई. इन लोगों के पास एक एक वो कोर पावर ज्यादा होता है. इनका एक रॉ पावर जो होता है ना, देखो दे हैव समथिंग जो इनका एक अपर हैंड है, इनका एक वो सीक्रेट वेपन है हर चीज को लेके. इफ दे गेट्स यू डाउन, वो टेक्निक से तुम डाउन हो ही, वो उनकी जो पावर है ना वो तुम्हें नीचे रखेगी. दैट वोंट लेट अलाउ यू टू गेट अप है. दैट्स वन थिंग दैट इज. और स्ट्राइकिंग की टेक्निक्स लाइक देन अगेन पावर कम है. अगर स्ट्राइकिंग टेक्निक्स भी नहीं है तो लाइक ही हैज दैट पावर, ही हिट्स यू, ही विल लाइक ही माइट जस्ट रॉक यू है. He might not have that volume, technique wali volume now, but he will get you down with that power. And if he gets you, getting out would be like really, really difficult. And we know, like me, and like, we know the Cremelli boys. Coach came and just create the killers. Yeah. And despite of knowing that, I'm saying that this won't be an easy fight for Avizu. This would be a difficult fight. Yeah, I also want to add that from all the fighters in this particular card, Dushwan is one of the guys who's much more established as a wrestler. Exactly. Am I right? And as good, I mean, we've seen Avizo fight in his last fight. It was he showed his skills. It was really good. But this one, Avizo got a short notice fight last time too, right? Like an opponent was on short notice, right? Avizo's. Yes, correct. MFN 9. Avizo Lanamai ने replacement fight ली थी against another TCA guy. There's a famous fighter Long Sukumba जिनकी fight होने वाली थी against Abhishek Negi, and Long Sukumba का जो knuckle है that got fractured camp में, तो उनके replacement में Avizo Lanamai आए थे fight करने के लिए. yeah, and he did really well, man. As much as Abhishek tried to stuff him down in that fight, he defended well. So his takedown defense has to be on point. I mean, because I don't know how I won't. I mean, I can't say how good is Dushien's skills with his hands, but I can say from what I've seen, like Avizo, if he wants to win this fight, he has to keep this fight standing at all times. Don't even try to go down with Dushin. And like, he needs to keep the fight at range. Try to keep this fight at range. If you want to fight like a guy like Dushan, fight at range. Because he has that power I'm talking about. If he hits you, like, let alone be like takedown. Don't like if it's a punch. If that doesn't knock you out, if that doesn't rock you, that punch will at least hurt you, man. That will hurt you really bad. That's one thing. That punch would hurt you really bad. I think मैं दोनों से डिफर करूंगा इस मामले में. Why? Because अगर आईमा नेशनल्स में आप लोग आए थे तो आपने देखा होगा कितना मिक्सअप करते हैं, कितना बढ़िया अपनी टेक्निक्स को मिक्सअप करते हैं टीसीए के लड़के. Not even लड़के, even सरिता also. कॉम्बैट एकेडमी में एक चीज की मैंने देखी कि they'll throw some punches and immediately आके टेक डाउन करेंगे तुमको. जितने भी लड़के मैंने देखे सब यही मोस्टली यही इनका है. तो जैसे कि that mix up is good, but like we are talking about here, like Dushant is an elite wrestler. No, not just good wrestler, he's an elite wrestler. And there's a talk around town, like there was some like issues, like some kind of problems. Otherwise, he would have been a potential representative of Indian Olympics. That's what so see, that's a talk around town. And if you want, if you are capable of representing India in Olympics, bro, elite is a small word. That guy, he would like absolutely kill you on the ground. Like, you can have tremendous BJJ, you can have anything. Like if that guy gets you down, like that fight is getting over for you. Like no say, but that fight is getting over for you. I love the TCA boys myself, bro. I have had recorded episode with Coach Kremele. The boys are really good, man. We interacted with the boy. He's a really great guy. And we love the TCA, like the TCA guy. We love the guy. We love the coach. But the thing is, like we're talking about, like they have been smart. They have been the smart fighters. But to win this fight, they have to be smarter. Because the opponent is hungry. He has skills.
but more often is hungry. He's hungry to prove. He's hungry to make a statement, and that's what makes a guy dangerous. So Dushyant is probably the most dangerous guy on that card. Get that? Like Well, again, I'm watching it. I'm really sorry, Donny. I have muted you for a moment. Yeah, so uh, जैसा कि मैं बोल रहा था कि this is a mixed martial arts. This is not wrestling. आपने अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग डैन हेंडरसन की अगर आपने फाइट्स देखी होंगी तो देर बहुत सारे रेसलर्स ने डैन हेंडरसन को टेक डाउन करा है एंड डैन हेंडरसन इज अ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग नॉट गोल्ड मेडलिस्ट देन सम काइंड ऑफ डैन हेंडरसन का मेडल है ओलंपिक में दैट आई एम श्योर ऑफ लेकिन एंड इवन व्हाट्स द नेम ऑफ द डैनियल कॉर्मियर फोर्थ पोजीशन थी इनकी हेवीवेट डिवीजन में 2008 में तो ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत बढ़िया रेसलर हैं तो आपको टेक डाउन नहीं कर सकता कोई इवन No, it's not like that, bro. But like you're talking इवन about, like you can't say a normal guy, like somebody won't be getting DC down so easily. Okay? Like you have to be exceptionally like good to get DC down. So that's the same thing. The नॉट DC boys, एक्सेप्शनली गुड Avizo, नॉट एक्सेप्शनली गुड बट एमएमए है ये यहाँ पे कुछ भी हो सकता है एट एनी स्टेज ऑफ द पॉइंट आपका टेक डाउन हो सकता है तो व्हाट आई एम सेइंग इज वेरी गुड डिफेंसिव रेसलिंग है जितने भी टीसीए के फाइटर्स हैं उनके पास साथ में आई एम नॉट श्योर व्हाट काइंड ऑफ स्ट्राइकिंग दैट दुष्यंत वी कैन सी बिकॉज एक प्रिडोमिनेंटली रेसलिंग उनकी फाइट्स में हमने रेसलिंग ही देखी है मैंने तो जितनी एक फाइट देखी है उनकी दो फाइट्स देखी है सॉरी तो आई थिंक अवीजो रेंज में रहकर और टेक डाउन डिफेंस अगर करते हैं तो द फाइट इज इन द बैग डॉनी योर कमेंट ऑन इट Yeah, I understand it's an MMA fight, but you have these. I mean, like like you said, right? The guys from TCA they fight smart, so they are gonna have to be very very smart and try not to take this fight to the ground with Dushyant, man. exactly my point. You guys are smart. You have to be smarter. But for this fight, you have to be smarter. I feel like I'm blowing Dushyant's horn right now, but that is the truth. Like same goes with me. Like it's like I'm like vouching for Dushyant. I'm like same like I've been saying a lot about Dushyant, but that's because the guy has skills. The guy has potential, and like that keep those things aside, bro. But I've like fighters coming in MFN have potential. They have the techniques, but Dushyant is hungry. He's hungry to make a point, and like Avizo is the guy in front of that. You know, he wasn't even in the like MFN 10 card. He got the fight without giving a thought. He said, "Yes, I'm coming in for it." This is this is his second like fight where he's fighting an opponent like on short notice. Like as Exactly. was for Dushyant as well and for Avizo as well. I mean, for Avizo he has to change his entire game plan because he was supposed to fight a guy who fights in a different way. Now he's gonna fight a guy who has a completely different approach to the game, right? So, but yeah, I'll tell you one more thing. You don't need the wrestlers, man. I mean, you can go and ask George Masvidal. Would he want to go to the ground with Ben Askren? Ben No. Askren would. And Ben Askren would and kill him, you bro. As much as we get the fact that it is MMA, okay, but still, bro, when you like, fight against bro, you have to be good to get a guy elite wrestler down. You have to be good to get a elite wrestler down. Like you can mix things up. You can get the strikes in, and then you can change it up. But if a wrestler is there, like the moment you touch his legs, he knows if something is coming up. He would get on the guard. Yeah, he would get on the guard. And that guy has been in the akhadas, भाई. अखाड़ों में जिंदगी बीती है लोगों की. तो अगर वो उसे पता है कि कब कोई टेक डाउन लेने आ रहा है, कब कोई मुझे गिराने आ रहा है, मुझे कब क्या करना है. और you get the takedown, भाई. You get him on the takedown. ठीक है. Real wrestling starts on the ground. ठीक है. Real wrestling starts on the ground. ठीक है. Takedown का step है. Like even if you get to Aviso gets him down, what's the guarantee that he doesn't just like Irunami roll and turn the things on him? Like that's where he will get more dangerous. बिल्कुल एनी फाइनल कमेंट्स डॉनी No, man. This is gonna be a clash. I mean, yeah, I have one more. It is a clash of two different styles, and yeah,
and two different cultures. I'm gonna say like वो अखाड़ों वाले दुष्यंत comes from अखाड़ा, हरियाणा. ठीक है, he has that boiling blood in that coming in, and Avijay is coming from Nagaland. ठीक है, the beauty of Northeast. ठीक है, he knows how to keep the calm and composure. ठीक है, he's aware of that. So they are like the parallel sides of a coin, the opposite sides of a coin. ठीक है, so like ये जैसा ही मैचअप हो, eventually turns out to be good. Battle of cultures, battle of people with two different natures, battle of two different sides. Yeah, so that is all. And probably I was gonna say this will be the biggest, finally, biggest challenge for Aviso. What? yes, I I agree. think Aviso Biggest has test fought for some tough Aviso, but competition. मैंने अवीजो गैमएफ के जो प्रीवियस इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स हुए उसमें गोल्ड मेडल ला चुके हैं इंडिया ने. So I he has done he has his due wrestling in him. And another thing what I wanted was uh, I don't think अवीजो का प्राइमरीली फोकस ये होगा कि मैं उसे टेक डाउन करूं, बट स्टिल एक रेंज बना के जैसा कि इनिशियली निखिल ने कहा था, दैट माइट बी अ प्लान फॉर हिम. Let's move forward and another mutant boy Digambar Singh की fight होने वाली है against Akib Ali. And I think जिसने The भी king of elbows, MFN9 देखा Digambar होगा Singh Rawat. जिसने भी MFN9 देखा होगा, uh, the first fighter that you can say MFN9, that is Digambar. Like दिगंबर MFN9 के बारे में created a जितना बोले superstar. उतना कम है. MFN9 created a superstar, and the superstar was Digambar. Yeah. Digambar, the king of elbows. Like that's the name he should give him to. That's the alias he should go by. Digambar, the king of elbows, Rahul. Those elbows, those spinning back fists, those spinning back elbows, opened Prakram, and it opened the gates of glory for Digambar. Yeah. And he's up against a TCA boy too, right? He's fighting a TCA guy too, right? If I'm not wrong. No. उनके जो ओपोनेंट है आकिब अली, ही ट्रेन्स एट रॉनिन्स, ही इज फ्रॉम कोलकाता. Okay. वहां से ट्रेन करते हैं. बहुत ही बढ़िया इनका बीजेजे गेम है. तो बहुत सारे लेट्स मुझे नाम याद नहीं है टूर्नामेंट्स के, बट इन्होंने बहुत अच्छा इनका नाम रहा है. ऑल्दो 2 फाइट लूजिंग स्ट्रीक पर हैं ये गोवा बीच. उससे पहले एक एक जगह और ये 2 फाइट विनिंग हीरो फाइट नाइट में ये हार चुके हैं. लेकिन एंड funny enough not funny enough that can be मनदीप प्रजापति के साथ इनकी SOW में जो फाइट थी, दैट वाज अ ड्रॉ बिफोर मनदीप Oh. जॉइंड MFN. तो आप देखें अच्छी फाइट इन्होंने मनदीप के साथ पुट ऑन करी थी. तो आकिब अली के एक बहुत बढ़िया ग्रैपलर हैं. ग्रैपलिंग स्किल्स इनकी बहुत बढ़िया है. बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में इन्होंने पार्ट लिया है बीजेजे के. अच्छा वहां पे परफॉर्मेंस दिया है. तो दैट इज ऑल अबाउट आकिब अली. एंड दिगंबर का जो क्या ही बोले दिगंबर के बारे में, इनका जो डेब्यू था, दैट He's a prodigy, स्पीक्स man. वॉल्यूम. He's a prodigy. दैट स्पीक्स He's वॉल्यूम. a prodigy. एंड करंटली ये बालीज एमएमए में इनका पूरा कैंप हुआ. म्यूटेंट एमएमए ये इससे पहले अभी भी वहीं पे हैं, ट्रेन करते हैं. बाली एमएमए से जब मैं इनसे बात कर रहा था तो बहुत सारी कुछ नई टेक्निक्स को कैसे इन्होंने रिफाइन किया है अपना, इन्होंने मुझे बताया. तो आई थिंक टेक्निक के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया इन्होंने. स्ट्रेंथ फैक्टर तो पहाड़ों के लड़कों के पास होता ही है. हम लोग पहाड़ों से अप डाउन करते करते ये लोग बड़े हुए हैं. तो हम लोगों का उसमें तो वी हैव अ अपर हैंड फ्रॉम ऑल दीज बॉयज. लेकिन Now उसके the अलावा same goes भी for Haryana boy. Like the Haryana boys, like some guys like Sanjeet, guys like Dushan, they also have this power. And that's the thing with Indian fighters, I believe. no Indian fighters coming from. I didn't say about fire. I was thinking अब मैं endurance के बारे में बात कर रहा था. स्टैमिना फैक्टर जो आता है Okay. फाइट में, वो क्योंकि आप देखें इतनी ज्यादा एल्बोज, इतनी ज्यादा लेग किक्स, इतनी ज्यादा पंचेस लगाने के बाद भी अगर आप थक नहीं रहे, दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट योर स्टैमिना. And तो पहाड़ी I लड़कों के think पास वो पूरा एडवांटेज होता है. we all love Dushyant. I'm sorry, we all love like sorry, Digambar. Digambar. We all be like he's the biggest favorite getting into this fight. He's one of the biggest favorite getting into this fight. But the thing is, in the Prakram fight,
one thing people didn't notice was like Prakram did landed some really good overhands on him, and it took those overhands. Okay, those overhands were like really powerful because Prakram was getting hit, like was on the receiving end of the beating. Okay, and like the overhands were like everything he had. So he was hitting with everything he had, and a guy like Prakram hits really hard. Okay, you know Prakram hits really hard. So he took those shots and kept on beating Prakram. So you know he got a pretty good chin. Okay, that hasn't like it hasn't been put test because he's so good. He didn't allow Prakram to hit him that much. But yeah, those overhands he took, like he didn't even like he took them. He did move back a little, but yeah, like didn't drop him or anything. He kept on coming with offense. So that guy is really good. बिल्कुल। एंड आई थिंक उनकी जो पिछली फाइट थी वो बहुत इट वाज़ अ लेट स्टॉपेज, बहुत जल्दी रोक देना चाहिए था, लेकिन उस लेट स्टॉपेज की वजह से एक सुपरस्टार जैसा कि आपने कहा निकल के आया देहरादून से। उनकी नी स्ट्राइक्स हमने देखी, उनकी एल्बो स्ट्राइक्स अपनी उनकी स्पिनिंग एल्बो हमने देखी, स्पिनिंग फिस्ट हमने देखी। तो Like the बहुत ही mix-up है ना एक बहुत कमाल है भाई. ऑल राउंड बहुत ज्यादा स्ट्राइकिंग कमाल पैकेज का. जो म्यूटेंट वो जो एमएमए एकेडमी में कॉम्बोज, बना हाँ, है, दैट इज़ वो जितने कॉम्बोज ऐड कर सुपीरियर। रहे हैं ना आपके, लाइक यू नीड, लाइक उसके हिसाब से कॉम्बोज ऐड करने के लिए यू नीड टाइम. और वो दिखाता है कि जब वो लाइक इवन इन क्लिंच ही हैड सो मच टाइम टू बी लाइक डू ऐड ऑन दोस कॉम्बोज. ठीक है, स्पिनिंग एल्बोज. अरे आप क्लिंच में हो भाई, लाइक एनी मोमेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो घूम के एल्बोज मार रहा है, फिर घूम के एल्बोज मार रहा है, सामने से एल्बोज मार रहा है, हुक्स मार रहा है, फिर अपर कट्स ले रहा है. तो दैट शोज कि उसके पास कितना टाइम है. ही नोज लाइक अपने अपना एरिया कैसे मुझे सिक्योर करना है. ही नोज हाउ टू लाइक put the things, even the clinch to his own advantage. Yeah, that's what makes him a special guy. He's a really special guy. He's one of the guys you need to watch out for. Digambar is the fighter you watch out for. बिल्कुल। एंड लाइट वेट डिवीजन में फाइट हो रही है, तो लाइट वेट डिवीजन में टाइटल के लिए भी आगे जरूर जब होगा तो ही माइट बी वन ऑफ द फ्रंट रनर्स फॉर दैट लाइट वेट बेल्ट। Front runners you're talking about, like the moment belt get introduced, he might be the guy who's getting the title shot. Like he is डेफिनेटली, in the title fight. And like डेफिनेटली। why don't you give him a title fight? If he wins this fight, eh, and if he wins it in the similar manner, the way he won the Prakram fight, okay? He is in the top of lightweight division by. Okay? You have the fans, you have the people behind you because people know who Digambar is. Yeah. And that's the guy, like he would just carry the belt. And he's the guy that need to carry the belt. बिल्कुल। एंड आई थिंक अगर ग्रैपलिंग वर्ल्ड में हम नहीं जाते हैं तो विल सी अ वेरी अर्ली, वी माइट सी एन अर्ली स्टॉपेज, एक अर्ली स्टॉपेज देखने को मिल सकता है हमें अगर ग्रैपलिंग में ये फाइट ना जाए तो। चलिए इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। एंड इसके अलावा हमारे पास फाइट है आरसेम्बा ओस्कुम और दिनेश नाओरेम की। Dinesh won at IMA Nationals, the contract. And यस, Asim Bhai says, then again, रिसेंटली आईमा earlier. नेशनल्स में जीते हैं अपने डिवीजन में। और एंड फन फैक्ट, गैमा की जो नेशनल्स हैं वो भी इन्होंने ही जीती थी लास्ट ईयर 2021। Hmm. गैमा इंडिया ओपन था जो, वो भी इन्होंने ही जीता था अपनी वेट कैटेगरी में। तो बहुत बढ़िया एमेच्योर करियर रहा है दिनेश का अभी तक। सेम चीज अगर हम बात करें आर्सेनबा की, दोनों लड़के बाय द वे नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, दोनों Hmm. नॉर्थ ईस्ट से आ रहे हैं। एंड अगर आप इफ आई रिमेम्बर दिनेश नायराम की जो दिनेश नायराम जब गैमएफ, सॉरी आईएमएफ, आई एम रियली सॉरी, आईएमएफ में, आईएमएफ के जो फाइनल्स थे जो कजाकिस्तान में हुए थे आई थिंक लास्ट ईयर, उसमें फाइनल तक गए थे ये, और फाइनल में ये एक कजाकिस्तान के फाइटर से ही हारे थे। तो ही हैज सम रियली गुड रेसलिंग गेम, और बहुत बढ़िया एमएमए का इनका एमेच्योर करियर था। गैमएफ, आईएमएफ इंडिया और आईएमएफ वर्ल्ड के फाइनल तक जाना बहुत बड़ी बात है। अगेन अप एंड कमिंग फाइटर्स आते हैं वहां से। आरसेम्बा ओस्कुम की अगर हम बात करें, अगेन एम्स्टरडेम में जाकर इन्होंने गैमएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था इंडिया के लिए। इंडिया के लिए भी सेम इन्होंने स्ट्राइकिंग में गोल्ड मेडल जीता था गैमएफ में। तो बहुत ही बढ़िया इनकी दोनों फाइटर्स निकल के आए हैं। एंड एमएफएन 9 से अगर कोई और हाईलाइट जो हुए थे वो थे आरसेम्बा। आरसेम्बा ने अपने लेग किक्स का जो मुजाहिरा किया था,
लेग किक्स बिल्कुल जोसे आल्डो प्राइम, लग रहा था कि एक जोसे आल्डो की भाई फाइट चल रही है, वो प्राइम जोसे लेग किक आल्डो सबने की। देखी भाई, वो सबने फील भी करी थी लेग किक्स। हम मैं स्क्रीन की उस तरफ से देख रहा था कि फील हो रही थी। बिल्कुल आई थिंक, और मैं जो जर्नलिस्ट बॉक्स में बैठा हुआ था, मैं सुन सकता था उन लेग किक्स को, इतनी तेज वो लेग किक्स थी। अमेजिंग, बहुत ही ब्रूट पावर के साथ मारी थी। एंड विश्वामित्रा, हैट्स ऑफ टू यू, जो आपने इतनी लेग किक्स लेने के बावजूद आप वहां पे खड़े रहे, यू हंग इन फॉर एग्जैक्टली। द होल फाइट। यस, हिज ओपोनेंट वाज विश्वामित्रा, MFN 9 में। तो अगेन आई थिंक बोथ द फाइटर्स बहुत बढ़िया, इनके पास गेम है, दोनों अप एंड कमिंग हंग्री फाइटर्स हैं। तो देखिए, गॉड नोज आगे क्या होने वाला है, लेकिन बहुत बढ़िया फाइट हमें देखने को मिल सकती है फ्लाईवेट डिवीजन में। एंड आई तो एक थिंक, बस अब एक फाइट बोलो बोलो। हम तक ऐसे ही अब एक फाइट और रह गई जिसके बारे में अब तक बात नहीं करी हम। दैट इज बिल्कुल। माय गाय जॉर्डी। एंड जॉर्जी, यस। एंड फाइनली इस अंडर कार्ड में आखिरी फाइट हमें देखने को मिलेगी जॉर्जे स्टोयानोविच और पुण्यजीत लिखारू के बीच में। जॉर्जे स्टोयानोविच आप सब लोग जानते होंगे, कम्स फ्रॉम सर्बिया, 10th प्लैनेट जी जित्सु में ये ट्रेन कर चुके हैं, बहुत बढ़िया ग्रैपलर हैं। और इनका बहुत ही अच्छा टॉप कंट्रोल बहुत बढ़िया है। संजीत बुधवर के साथ इनकी फाइट हुई थी, इन्होंने फर्स्ट राउंड पूरा टॉप कंट्रोल रखा था संजीत बुधवर के अगेंस्ट। वहीं अगर हम बात करें सेकंड पुण्यजीत लिखारू क्रॉस फाइट क्रॉस फाइट में ट्रेन करते हैं अंडर सिद्धार्थ सिंह। राइट नाउ बाली में वो ट्रेन कर रहे हैं, एंड बाली में रिसेंटली उन्होंने BJJ टूर्नामेंट जीता है। तो अनदर वेरी स्लिक सबमिशन आर्टिस्ट हैं पुण्यजीत लिखारू। बहुत टाइम के बाद MMA में आ रहे हैं ये। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑलमोस्ट 2 साल के बाद इनकी फाइट हमें देखने को मिल रही है। एंड ही इज अनडिफीटेड 2-0 का इनका रिकॉर्ड है। देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि दो बहुत ही बढ़िया जिजित्सु के प्लेयर्स क्या करते हैं इस फाइट में। लाइक एंड वी लाइक आई लाइक गो अहेड। जॉर्जी की जो पावर है, जॉर्जी कैन हर्ट यू, जॉर्जी कैन ओपन यू। और वी सॉ दैट इन संजीत भाई और संजीत वाली फाइट में जॉर्जी इज स्ट्रांग। लाइक I won't be lying if I say like I'm little bit like clinched toward Georgie in this fight. I'm little bit like थोड़ा बहुत हूँ, मुझे लगता है कि Georgie can pull this off. Georgie has the skills. Like Punyajit is like he's great, not lying. जॉर्जी But I think the power, like the power Georgie has might be the edge. And this time he's not fighting in featherweight, भाई. This time he's बिल्कुल fighting with bantamweight. वो उसका खुद का division है. So he's stronger in that division. जरूर। एंड आई थिंक आई थोड़ा सा डिफरेंस इसमें मुझे लगा, क्योंकि जॉर्जी आई नो फेदरवेट डिवीजन में फाइट कर रहे थे, एंड अगेंस्ट अ स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट संजीत बुधवर, वापस से वो बैंटमवेट या So sorry for that He was the interruption, main. guys. नो Like प्रॉब्लम, we are नो in the last प्रॉब्लम। fight, तो brother. We are discussing वी आर Georgie डिस्कसिंग versus Punyajit. Ah, पुण्यजीत एंड जॉर्जे स्टोयानोविच। तो जॉर्जे के बारे में मैं बात कर रहा था, मैं बहुत ही पोलर ऑपोजिट सोच रहा हूँ। जो निखिल बोल रहे हैं कि ही इज स्ट्रांग, ही इज दिस इज दैट, ही माइट बी स्ट्रांग, यस। एंड आई थिंक बैंटमवेट डिवीजन में वो जरूर स्ट्रांग होंगे, उनके पास अच्छी ग्रैपलिंग स्किल्स हैं। लेकिन लेकिन बाली MMA में ट्रेन कर रहे हैं पुण्यजीत लिखारू, एंड ही वाज ट्रेनिंग विद ऑल दीज गाइज फ्रॉम MFN। साथ में अंशुल जुबली थे। UFC की जो टीम है, UFC एशिया की जो टीम है, वो वहां पे ट्रेन करती है। तो बहुत बढ़िया बढ़िया रेसलर्स और ग्रैपलर्स के साथ वो ट्रेन कर रहे हैं। तो आई थिंक एक कॉम्पिटिटिव फाइट हमें देखने को मिलेगी, जैसे कि yeah. मेरे हिसाब से कॉम्पिटिटिव फाइट हमें देखने को मिलेगी। डॉनी, प्लीज Mhm. प्लीज गो अहेड। Yeah, I feel like this fight is gonna be very, very competitive. So I don't know how good is Georgie's ground game is, okay, but I feel like Like Punyajit he can kept match. Sanjit Budhwar down. He gets Sanjit He Budhwar just down for a one whole round. yeah, I know. So And the second round was a close fight. Second round was a close mm, go. So I'll say Georgie is really, really good. yeah, but भाई, we can इतना we इतना can't पछतावा भी, इतना। we can't just I'm base really our sorry, Donny. discussion on What? recency bias, right, bro? But It's yeah, not the a thing is, bias, like
No, no, I'm No, not. I'm no, not. I'm not saying that you're being biased, but I'm just saying like recency bias, like the fact that you just saw him perform that recently in MFN, and you're just saying like, oh, okay, so No, no, like, you I've been know, following him for like, I've been following him. So I've watched him train. I've mm-hmm. seen his recent fight, like even after the Sanjeet fight and I before saw this that. fight, he has fought a fight. In another I saw promotion, that. he has fought in. I'm like forgetting the name. Like he Armada, is good, Armada. bro. Yeah, the same one. Yeah, Like he is good. I've been डॉनी following. Like डॉनी his skill set is good. एक चीज बोलना चाहूंगा डॉनी अ, yeah. निखिल इतना पछतावा भी मत करो कि पछतावा जिसके लिए हो रहा है वो भी बोल दे भाई अब तो सच बोल दे No, bro. What truth is that? Tell me, tell No, me, tell me. What truth is that? I want to know. like he, सो like डॉनी एमएफएन 9 की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है ताज पैलेस दिल्ली में एंड देयर इज अ गाय एक लड़का आता है कैमरामैन के साथ और ही कट्स अ प्रोमो दैट really really passionate promo he cuts and at the end he I think f bomb भी किया था I think if I'm not wrong no, That was me. and this guy over here was the one and Yeah, bro. yeah. My battery he is dropped going this down. and he dropped this whole promo on George. So that's what I'm saying. Don't repent that much कि सामने वाला भी बोल दे कि I अब am तो not सच बोल repenting, दे. bro. Like me and Georgie are on Just really good joking. terms now. Just joking. Me and Georgie He's a are on very good. really good terms. We are like, He's a very he's good a guy. sweet guy, man. Sweet guy. He's a Yeah. sweet guy. Many. And like after cutting the promo, I was sitting next to his father, like right next to his father. I had no idea. Like I just cut a promo for his son, and like I'm introducing myself. Hello, so this is Nikhil. I do this show by the name of that geek from show. And he's like, yeah, cool. No, but I'm like, sometimes you need whoa, to stand out, right? You need to do something bro, outstanding, right? stand out there. Like I'm saying, like that must not have been good. That I shouldn't have done that. That's a different thing. Mm. I made a name out of that thing. People know my face, my name, everything after that. Any I'm publicity is good apologetic to for that. That's no cap. That's no right. Like I'm apologetic for that. I shouldn't have done that. I know that. Like, I shouldn't have done that. I Good. shouldn't like Good that was point, something that I Donny. shouldn't be have been doing Plus one as on a that. media person. Okay. What did Donny say? I didn't heard. Yeah. What did he say? Yeah. डॉनी इस फाइट के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? It's gonna be a battle of grapplers, bro. So Punyajit is one of the better grapplers coming out of coming out of India, and Georgie, as from what we know and heard, he's a 10 planet guy. So we know the kind of level that 10 planet guys bring into, combat sports. So, but the thing is that like Punyajit has been training in Bali, and he has been fairly active in BJJ competitions as well. So I'm sure he must have But the improved layoff his might level. be a no. But I'm saying that layoff might be a thing. Like you're coming out of a break. You have been out of competition for a long time. So that might be Yeah, like you're training, constantly training. That's a different thing. You're training, but a fight is a different thing. So I think that layoff is what I'm thinking that Georgia might edge out. Like the yeah, power and stuff is there, and like Georgia has been consistent. One thing, yeah, yeah. winning or losing, it This not year, matter, but he has been consistent. taking that into consideration, this year Georgie has been most busy because this is gonna be his third fight in this particular year, and Yeah, his recent exactly. fight was just like a month ago, I believe. Yeah, it was just a month ago. A month or two maybe. Yeah, so yeah, so he's been more active, and Punya has been out for a while. I mean, not out because of injury or anything, but I guess because he couldn't get any fights. I think he actually wanted to fight Clinton, if I'm not mistaken. But yeah, he got Georgie, so even this is gonna be like a tough but a good fight for Punya. So let's see what's gonna happen. I mean, this fight is also one of those fights where two prospects, they gonna they're gonna battle it out over there. But the thing is that Georgie, he's much more experienced. He has more number of fights, and he's fought like some tougher competition as compared to Punya.
I mean, he fought Sanjeet And Budhwar, man, like in this. so Georgia has somewhat same thing as Sanjeet Bhai. Like he doesn't breaks in adversity. Like you can like while he doesn't break in, he knows to how to take pressure on. So he doesn't break in adversity. That's one thing that might turn out like you can Yeah. Punijit can get him in a hold or something, but he would Yeah. be composed at that time and knows ki, like what I need to do. So that might works out for him. Yeah. So And Punya, but at this moment, Punya, uh, sorry. Continue, bro. Continue. yeah, I'll add at after this you done. moment एक जस्ट एक रैंडम फैक्ट बोलना चाहूंगा, Mm. नॉट रैंडम बट पुण्यजीत लिखारू सबमिशन स्किल्स के बारे में। ही एडीसीसी 2021 उन्होंने अपनी वेट कैटेगरी में जीता था, प्लस प्लस एडीसीसी अगर आप नहीं जानते हो तो कहाँ थे भाई अब तक। Mhm. थैंक यू निखिल, थैंक यू डॉनी, अप्रिशिएट योर टाइम मैन। Like we appreciate you for calling us here, brother. Like you Thank you for consider us having for us. for your show. Like it's always a healthy conversation between like guys like us. Guys, MFN 10 के तुम बारे में लोगों ने हमने बहुत डिस्कस की, सारी फाइट्स हमने डिस्कस की। इट वाज अ रियली गुड कन्वर्सेशन एंड आई अप्रिशिएट द टाइम डॉनी, निखिल, अप्रिशिएट योर टाइम। थैंक यू गाइस। Sorry, I had to leave in between, man. I needed to attend some really important call.